So, a very warm good afternoon to all of you, and welcome back to your study channel, Unacademy. Let's crack it together. So, today we are going to practice a lot of questions together. They are very nice set of questions which have been specially sorted out for you so that you could have a nice practice of calculus, because in calculus there are a large variety of questions which have been asked till date, and there are a lot more which can be asked. Okay, so we are going to practice the previous year questions which let you understand the concept, or as well as how you're going to apply the knowledge you have gained so far in calculus. Okay, so as always, before starting the lecture, let me introduce myself to you. I am Arohi Malviya, MTech in Transportation, Civil Engineer from NIT Trichy. 2.5 plus years of teaching experience in GATE and ESE, and have mentored more than 6,000 students for the same. Previously, I have mentored 5,000 plus students for JEE Mains and Advanced in Mathematics. I have myself qualified GATE 3 times, cracked the PSC exam, SSC JEE, and I have had my project under Central Road Research Institute, CRRI CSIR. And this is my promo code ARO10, using which you can get a 10% discount on your subscription. And अगर आप अभी तक Unacademy app use नहीं कर रहे हो, तो just go download that Unacademy app. You are going to get the free special classes on Unacademy using this code. This will give you an access to the Unacademy special classes. तो चाहिए, just go and download your Unacademy learning app from the Play Store, and in the free live class section, you can search my profile also. That's with my name Arohi, and when you search, you will get my profile, which you can follow for the upcoming lecture notifications, as well as you can message me there on the Unacademy learning app, so that if you have any doubt, I'll try to clarify that doubt as soon as possible and help you out in the best possible manner. The best part of Unacademy, that's unbeatable and the most competitive part in the overall coaching industry, is we learn with the top educators of their respective fields, and they are teaching you and they are mentoring you basically for your exam preparation. So as you can just go and see in the Unacademy learning app, you will find out that all the top educators have been teaching you in their respective fields. And if you get your Unacademy Plus and Iconic subscription, there are a lot of benefits. Along with learning from the best educators, you have interactive classes, structured courses, PDF, live tests and quizzes. In Iconic, the added advantages are study material with a study planner as per your schedule, where you can prepare along with and also track your progress along with your preparation. And the complete schedule is a personalized a personalized coaching for you, so that if you miss in any point of your preparation, we are there to help you out and keep you on track. So what are you waiting for? Just go have a look at the Plus and Iconic plans. वहां पे जाके आप ये कोड मेरा यूज कर सकते हो ARO10. जब आप वो कोड अप्लाई करोगे, you will see that the rates have been reduced by 10% and they are changed to a minimal rates. Like just have a look. तो ये जो per month cost आपको पड़ता है, it is very beneficial, because if you compare the per month cost and it with any other coaching, you will find that this is very competitive. And also in this cost you are having the access all the time. ठीक है, तो आप घर से बैठ के कभी भी कर सकते हो. You can ask your doubt anytime. Okay, in normal coaching institute this is not possible, and that is the thing which is the best here at Unacademy. In Iconic also आप same code use कर सकते हो and get your 10% discount. Avail your 10% discount using the code ARO10. तो आपके जो rates हैं, you can see they will be reduced. And this announcement for the student of mechanical and civil, आज से आपका नया batch for grade 2022 and 2023 is starting. So if you haven't already enrolled, just go and enroll in the courses. आज से start हो रहा है on your Plus and Iconic account, so you can just have this access today. From today onwards, those who are the students who are planning for the GATE 2022 and 23, they can join these courses and have their preparation started right away.
इन सिविल ऑल्सो आज से ही नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इवॉल्व फॉर 2022 एंड असेंड फॉर 2023. So that's about the important notices. And the best thing is Unacademy is the best app for your preparation of railway, GATE, ESE, and SSC. So if you are not already taking the advantage of this platform, then you are surely missing it out. So do not miss this opportunity जो घर बैठे आपको मिल रही है, right on your laptops and mobiles. Have a look and start your preparation right now. Okay, so let us start our discussion, our practice of calculus questions today. So we have a certain good amount of questions being prepared here already, which are your previous year questions. अगर आप इन questions को भी ठीक से attempt कर लेते हो और इनके behind, if you understand the concept behind this question, then definitely it will be very helpful to you in your exam. Okay, so if you haven't studied calculus in depth right now, these questions will also help you out to attempt your questions in your GATE examination in February. Okay, so let's begin with, so just try that you answer these questions along with me, and I'll also be discussing the same concepts. So while discussing, we'll come to know a lot of things about the same, and you will also come to know a lot of methods how you can approach to different questions. Okay, so let's start. Let's begin our lecture. Let's start our practice. So the first question here, you have the curve given by the equation. What do you comment about this curve? Whether it is symmetric about x-axis, y-axis, line is equals to y equals to x, or tangent to x is equals to y is equals to a by 3. We have to answer this question. तो देखो, किसी भी कर्व का अगर आपको symmetric attitude check करना है, whether the curve is symmetric or not. If you have to check whether the curve is symmetric about x-axis, then replace x by minus x, and if the equation, the function of x remains the same, okay, then the curve is symmetric by x-axis. If you are checking about y-axis, then function of y is equals to function of minus y. That means when you replace y with minus y, if the function do not change, that means the function is symmetric about y-axis. ठीक है, line x is equals to y के लिए अगर चेक करना हो, x is equals to y, in that case at the place of x and at the place of y, just change the values. At the place of x you put y, and at the place of y you put x, and if the functions is the same, if the function remains the same, then the function is symmetric about the line y is equals to x or x is equals to y, whatever, it's the same. So let us check. If you are checking about x-axis, so if you put minus x instead of x, this is what you are going to get, 3a minus x y. तो आप देखो ये जो आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3axy आ रहा है. दिस इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन. Okay, so this is not equal to the original function. That's why it is not symmetric about x-axis. Similarly, y के लिए भी करोगे तो this is what you are going to get. So it is not symmetric about y-axis. Now, if you check about the line y is equals to x, okay, about the line y equals to x. So instead of x, I am putting y, and instead of y, I am putting x. So this is what I am going to get, and this what result I am getting is similar to the original function. That means the line is symmetric about, sorry, the function is symmetric about the line y is equals to x. Okay, so symmetricity check करने के लिए this is a very simple rule. बस आपको check करना होता है whether the function for positive x, negative x are equal or not. Okay, I hope this is clear and there's nothing much to discuss here. Now let's move forward. Okay, this question is regarding your Taylor series, right? So the real values of x cos x can be written in one of the forms of convergence series given below. So basically ये तो बहुत direct question है, बहुत basic question है from your Taylor series. It's directly asking you about the expansion of cos x. ठीक है, the expansion of cos x is definitely for real values of x only, because Taylor series expansion exists for real valued function.
Okay, so what is the answer here? Definitely the answer is B, isn't it? Cos is an even function. Cos is an even function. That's why it has even powers. ठीक है, तो जो भी even powers वाला है, that will be the function with alternate positive and negative. अगर sin का expansion आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो, sin is an odd function. The powers of sine function will be odd powers with alternate plus and minus sign. So the answer here you have is cos x is equals to 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial and so on. Okay, the next question. Let fx be a polynomial and gx is equals to f dash x be its derivative. If the degree of fx plus f minus x is 10, then the degree of gx minus g of minus x is. Okay, so this question is a bit tricky, and but although it's also an easy basic question, just tell me what should be the answer for this question. Basically, अगर आपका कोई function fx है, and if you are adding fx plus f minus x and the degree is 10, okay, so the degree is 10, that means there is a term with x to power 10, okay, कोई भी coefficient उसका कुछ भी हो सकता है, and then there will be remaining terms as well. So there is at least one term with x power 10. Now if you are checking about gx is what? F dash x. So when you are differentiating this fx, okay, देखो अगर fx and f minus x you are adding and getting a term with highest power as 10, then definitely fx is also a function of 10 degree 10, and f of minus x is also a function of degree 10. बिकॉज दो फंक्शन को ऐड करने से उनके डिग्रीज में अंतर नहीं पड़ता है, द कोएफिशिएंट्स ओनली चेंज. ओके, सो डेफिनेटली इट इज अ 10th power function. The degree is 10, so gx is f dash x, so definitely gx will be a function with degree 9, because when you differentiate basically you are reducing the degree of the polynomial. So the degree of the polynomial gx is 9. So the degree of the polynomial g minus x will also be what? Degree 9, right? So the degree will all for this also will remain 9. So if you subtract gx minus g of minus x, ठीक है, so देखो इसका highest power term will be x a1 x to the power 9, and इसका highest power term will be a1 to the power minus x to the power 9. So this will become 2 times a1 x power 9. So the highest degree will be 9. So the answer here will be 9. It is a numerical answer type question. So your answer will be 9. अगर इसकी जगह इन्होंने पूछा होता gx plus g of minus x की डिग्री क्या होगी, okay, if this was the question, then in that case अगर उन्होंने add करके पूछा होता तो उस केस में your degree would have become 8. Okay, if this was the question, because when you add gx, the highest power term x power 9, and so this would have cancelled out, है ना, तो odd powers cancel हो जाती, तो highest power would have be the highest even power जो कि 8 बचता, but they have asked with a minus sign here, that means your highest degree will be 9. Okay, next question, let us see. The sum of the infinite series. Okay, how do you find the sum of an infinite series given here? तो जस्ट ट्राई टू फाइंड, ऐसे जितने भी सीरीज के सम है, सीरीज सम, ट्राई टू रिलेट इट विद योर टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ द नोन सीरीज. ओके, सो टेलर्स एक्सपेंशन आपको साइन कॉस e पावर x log 1 plus x log 1 minus x and so on have I have already taught you and I have asked you that you should remember those expansion because they are important. ओके, अब ये जो आपका सीरीज है, दैट दिस सम 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on,
So this sum, if you compare it, you should remember the expansion of log 1 plus x. Okay, the expansion of log 1 plus x is minus x plus x by 2 plus x by 3 and so on. Okay, तो अब अगर आप यहाँ पे if you take this expansion and this here, the expansion is an infinite expansion, that means your terms are infinite. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो this expansion will become, so this is expansion of 1 minus x. If you put x is equals to 1 here, तो आपका ये जो expansion बन जाएगा, this will become equals to what you want, 1 plus 1 by 2 plus 1 by. Okay, Ashok, I'll tell you that second part, no problem. Just look at this question and we'll look at that question again. तो आप ये देखो, ये this is the sum which you want, this is the sum which you want for the series, this is your series. Now you take this minus sign here, so you'll get log 1 upon 0 is equals to the sum which you want. So 1 upon 0 means log infinity. Log infinity is the sum. So log infinity does not give you a converging value. ठीक है, log of infinity will definitely be infinity, somewhere a very large value. That means the series of the sum of this infinite series will be infinity. Okay, so the sum is infinity. Here this is a diverging series, not a converging series. Okay, look Ashok here, as we were discussing, ठीक है, आपको ये समझ आया कि your function fx is of degree 10. ठीक है, तो f minus x is also of degree 10, no problem. Gx is the derivative of fx, that means if fx is of degree 10, so when you differentiate it, the degree will become 9, है ना, degree कम हो जाएगी. So gx is a polynomial of degree 9. Now when you have gx and g minus x, ठीक है, so suppose the highest power term of your gx is a1 x to the power 9, because degree is 9, right? So this is the term. So now if I find the highest power term of g of minus x, that will become minus a1 x to the power 9. तो अब अगर मैं gx plus g minus x को ऐड करती, तो जो हाईएस्ट पावर टर्म है x पावर 9 वो कैंसिल हो जाता. बट सपोज इसके आगे और भी टर्म्स होंगे, द टर्म्स x2 x पावर 8 एंड देन x पावर 7 एंड सो ऑन, आगे होंगे टर्म्स. तो अभी अगर यहाँ पे आप माइनस x के लिए निकालते, तो जो even power terms हैं, even power terms would have remained with the coefficient positive only. So when you have added these coefficient, this gx plus g minus x, जो आपका odd power terms होते हैं वो कट जाते हैं, right? When you add gx and g minus x, तो odd power terms आपके कट जाएंगे. You will be left with even power terms only. Okay, so x power 6, then next term will be with x power 4 and so on. Okay, okay, is the series sum clear? Next let's look at this again, a simple question from your series, Taylor series expansion. Let's have a look. You can directly answer this question. The limit of the following series as x approaches pi by 2. So when you look at this series, you should be definitely able to tell ये किसका series है. This series is of sin x, right? Sin x is an even function. तो even powers वाले term होते हैं with alternate plus and minus sign and so on. So now if this limit of x approaches in pi by 2, so what this expansion denote, this will denote sin pi by 2. So what is the limit of sin pi by 2? That's 1. Okay, so an easy question, 1 mark question, basic question. इसके लिए आपको बस एक चीज की जरूरत है. You should remember the Taylor series expansion of sin x. Okay, let's have a look at this question. ये function के basics चल रहे हैं आपके, तो ये तो आपको करना ही है. There should be no mistake in this
function basics. Let y square minus 2y plus 1 is x and the other function is root x plus y is equals to 5. The value of x plus root y you have to find. Okay, so basically these are two equations and you have two unknowns x and y and you have to find the value of certain expression. And I think this is very clear in the question itself कि आपको दो variables के solution को निकालना पड़ेगा. So simply just find out the value of xy or generate an expression x plus which is similar to x plus root y where you can directly find the value. ओके तो अगर आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हो तो आप x और y की वैल्यू निकाल लो और फिर उनको इस एक्सप्रेशन में डाल के इवैल्यूएट कर लो. ठीक है, सो फ्रॉम दिस सर्टेन एक्सप्रेशन just tell me the answer, try to calculate and tell the answer. Meanwhile I'll also discuss it. So I am writing it as 5 minus y square. Okay, so this is a very easy question. So you're getting y value as 3. So simply you can find out the value of x as well. ठीक है, y आपको 3 मिल गया तो यहाँ पे आप put करो तो you will get the value of x is equals to 4. Now you can put this value here to evaluate the expression. You will get 4 plus root 3, right? The value of root 3 is 1.7 something around. So you also have your GATE calculator there in GATE. So 1.732. This will be your approximate answer. ठीक है, up to 3 decimal places लिखा है तो definitely up to 3 decimal places आपको answer देना है, because if you do not answer it up to the required decimal places you are bound to lose marks. Let us look at the next question. Which of the following function describe the graph shown in the figure below? Okay, mechanical का question है, 2018 question. Just have a look. ऐसे कोई भी आपको ग्राफ दिया जाए and they ask you the function, so just write the values of x and y which this graph satisfy. ठीक है, mod use हो रहा होगा ये आपको definitely दिख जाना चाहिए because this function is breaking just like similar to the mod function. So we'll write the values of x and y which this function satisfy and you can check the options. Okay, this will be easier as compared to writing the equation completely because उसमें mod को derive करने के लिए आपको 2-3 बार सोचना पड़ेगा. तो we will see how. So this is 1 0 comma 0 is one of the values. The other value is 1 comma minus 1. Here if you see the graph is symmetric. ठीक है, तो अगर 1 comma minus 1 satisfy कर रहा है तो minus 1 comma minus 1 is also being satisfied. Similarly 2 comma 0 comma 2 sorry 2 comma 0 2 comma 0 and minus 2 comma 0 is also satisfied. I'll write here. ठीक है, तो आप कोई भी certain set of values, so if you take 0 comma 0 पहला ही this does not satisfy. ठीक है, a and c, a and a does not satisfy, so a is cancelled out. Without putting the values, if you want to find out the equation then also you can find it out. It's not difficult. Look, this function is breaking here at x is equals to 1. ठीक है, x is equals to 1, it is giving you value x is equals to 1, it is giving you value y equals to minus 1. Okay, so definitely it will be y plus 1 is equals to x minus 1, right? अब आप यहाँ पे देखो x is equals to 1 के बाद ये mod जैसा ब्रेक कर रहा है, तो you can write it this way. ठीक है, क्योंकि mod फंक्शन अगर आपको याद हो तो mod फंक्शन कैसा इस तरह से ब्रेक करता था where the x is 0. So here the x is 0 at 1, so this x is not 0 at 1, x is distributing it value at 1.
So this will be satisfied by the function for sure. And now if you want to write y is equals to mod x minus 1 minus 1, ठीक है. बट इधर एक और ऑप्शन है सिमिलर टू दिस विच कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन. बी और डी के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि कहीं वापस से मॉड तो नहीं आ रहा है. तो आप देखो, अगर एक और मॉड आ रहा है, दैट मीन्स द वैल्यू शुड बी चेंजिंग एट x minus 1 minus 1. That means x minus mod x minus 1 minus 1. That means आपकी वैल्यू इस तरह से चेंज होना चाहिए. When x minus 1 is equals to 1, that means x is equals to 2 and x is equals to minus 2, x is equals to 0. ठीक है, इन दो पे भी चेंज होना चाहिए आपका वैल्यू. तो दैट इज ऑल्सो बीइंग चेंज्ड. बट सिंस दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिक है, तो आप देखोगे कि इफ इट इज सिमेट्रिक देन इट हैज टू फॉलो द सेम कर्व बोथ ऑन द राइट एंड द लेफ्ट. सो दिस इज ओनली फॉलोड फॉर द ऑप्शन बी. अगर आप ये ऑप्शन डी देखो तो व्हेन यू पुट योर वैल्यू फॉर चेकिंग, your value equals to minus 2 comma 0. So when you put minus 2 here, what you're going to get is 2 for y. इसके अंदर अगर आप minus 2 comma 0 satisfy करोगे तो ये satisfy नहीं करेगा. अच्छा, I'll repeat it. Wait a minute. देखो, एक तो वैल्यू satisfy कर सकते हो, वो तो अनबीटेबल मेथड है, हमेशा सही होता है. अदर देन दैट, लुक, कोई भी एक वैल्यू आप पकड़ लो, the value where your function is changing its graph, ठीक है. So I am taking the value at this point and this point, ठीक है. ये दो पॉइंट मैं चूज कर रही हूँ बिकॉज इसके अबाउट फिर वो सिमेट्रिक है. So I'll write the equation according to this point and then satisfy it here also. तो देखो, when you will write for this point x is equals to 1 and y is equals to minus 1, तो कैसे लाइन की इक्वेशन लिखोगे? इस पॉइंट पे लिखोगे आप x minus 1 is equals to y plus 1, ठीक है. The slope of this line is what? The slope of this line is 1, ठीक है, क्योंकि ये 1, 1 और 2, 0 से पार कर रहा है. तो if you see the slope is 1, and since यहाँ पे x is equals to 1 पे it is changing direction, that means here it will be mod. ठीक है, ओके सौम्यदीप, क्योंकि कहाँ पे वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है? इट इज चेंजिंग इट्स स्लोप एट x is equals to 1, ठीक है. x is equals to 1 पे अगर वो अपना स्लोप चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई देयर विल बी अ मॉड एंड स्लोप इज 1, ठीक है. स्लोप आप यहाँ पे स्लोप तो निकाल ही सकते हो. लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो? सेम वे यू हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड पुट अ मॉड बिकॉज at x is equals to 1 it is changing its slope. Okay, so this is the equation which you have got by writing this part. ये पार्ट से आपको ये इक्वेशन मिली है. So it will definitely satisfy this also because आपने mod sign लगा दिया ना. When you have kept this mod sign, that means it is going to satisfy this as well. Okay, तो आपका जो इक्वेशन आ रही है that is coming out as mod x minus 1 minus 1. Okay, so now अगर आपको चेक करना है whether it is satisfying it or not, you can check at 0, 0 it is satisfying this point also. Okay, and अगर वो यहाँ के दो पॉइंट satisfy कर रहा है and it is symmetric, that means it is going to satisfy this left hand side part as well. क्योंकि आपने जब mod लगाया, you have already made this graph symmetric about x and y equals to 0. Okay, Soumyadeep, are you getting the point? अदरवाइज ये जो x और y की वैल्यू डाल के आप करते हो, उससे भी सेम ही चीज होता है, जस्ट यू आर एलिमिनेटिंग द ऑप्शन, यू आर अप्लाइंग द रिवर्स अप्रोच. ओके सौम्यदीप, let's have a look at the next question, the series question.
ठीक है, सारे सीरीज के अच्छे क्वेश्चन जो कि अभी तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, दैट हैव बीन framed here for you. The series is summation m is equals to 0 to infinity 1 upon 4m x minus 2 power 2m. You have to find for what value of x the series will converge. Okay, for what value of x the series will converge. So the convergence and divergence of series, we have already seen the convergence and divergence. आपको वहां पे मैंने बताया था, you have 3 tests to check the convergence and divergence. One is your ratio test, one is comparison, the other one is Cauchy's. ठीक है, तो आप कोई सा भी टेस्ट लगा लो and satisfy it to find the value of x. The best will be, since you know the nth term or mth term of your series, which is 1 upon 4m x minus 1 power 2m, ठीक है, और ये जो m is in a power series, तो आप Cauchy's टेस्ट लगा सकते हो, और you can also apply ratio test. There is no problem in both of them. ठीक है, but since ये power series में है, that's why Cauchy's test will be easier, because if you remember Cauchy's test क्या बोलता था, Cauchy's test used to say that if you find the limit of n tends to infinity, nth term of your series to the power 1 by n, and if you get the values as less than 1, greater than 1 or equal to 1, तो less than 1 का मतलब है converging series, greater than 1 का मतलब है diverging series, and equal to 1 का मतलब है failed. Test has failed. You cannot determine by Cauchy's test whether the series is converging or diverging. And in ratio test, what it said was the same, but the limit which you have to find was limit n tends to infinity a n plus 1th term upon nth term का रेशियो आपको देखना था, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है या इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यू कैन हैव कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और फेल्ड. ठीक है, तो आप कोई सा भी टेस्ट लगा लो, बट आई विल से दैट यू प्रेफर Cauchy's टेस्ट बिकॉज दिस विल गिव यू एन ईजियर रिजल्ट, क्योंकि इसमें आप पावर सीरीज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो आई एम अप्लाइंग द Cauchy's टेस्ट हियर. सो आई एम अप्लाइंग लिमिट n tends to infinity, nth term is 1 upon 4 power n x minus 1 power 2n to the power 1 by n. तो आप इसकी लिमिट को सॉल्व करो, काफी आसानी से सॉल्व हो रहा है, बिकॉज द पावर्स आर गेटिंग कैंसल्ड. यू आर लेफ्ट विद x minus 1 to the whole square divided by 4. एंड आपको क्या चाहिए, दिस शुड बी अ कन्वर्जिंग सीरीज. कन्वर्जिंग सीरीज, तो उसके लिए इट शुड बी लेस देन 1. तो बस आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. सॉल्विंग द इनइक्वालिटी and you will get your answer. So you will get x minus 1 square should be less than 4. That means x minus 1 should lie between minus 2 to 2. That means x will lie between minus 1 to 3. Okay, so what you are getting here is minus 1 to 3. Okay, is there any doubt here कि कैसे Cauchy's test लिखा? Cauchy's test, रेशियो टेस्ट, आप रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इफ यू अप्लाई द रेशियो टेस्ट देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है, तो रेशियो टेस्ट में आपका कुछ इस तरह से आएगा, 4 पावर n एंड 4 पावर n प्लस 1. ठीक है, अब आप इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व करना, and you can again satisfy the condition less than 1 in ratio test. The answer will be same. Okay, there will be no change in the answer because the converging criteria for both are resulting you to the same direction. ठीक है, तो दो टेस्ट जो हैं आपके, रेशियो और Cauchy's, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, Cauchy's टेस्ट इज यूजफुल फॉर पावर सीरीज. ठीक है, पावर सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है Cauchy's टेस्ट. चलो अगला देखो क्वेश्चन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन. ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 3 sin x plus 2 cos x. 3 sin x plus 2 cos x का टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपको बताना है. दिस क्वेश्चन इज टू टेल यू दैट इफ you have the expansion for any two series,
whether it is an addition or subtraction or whatever. Okay, ratio test is useful, Ashok, in the cases where you have the nth term as a polynomial. ठीक है, तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है आपका, रेशियो टेस्ट में आप क्या कर रहे हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a पावर m प्लस 1, ओके, m टेंड्स टू, ये आप निकाल रहे हो. तो अगर आपका m प्लस 1 भी सपोज कोई पॉलिनोमियल है, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस समथिंग, and mth term is also some polynomial, okay, I'm just randomly giving you an example. तो उस केस में आपके लिए ये जो लिमिट सॉल्व करना होगा ये बहुत आसान हो जाता है, पॉलिनोमियल, इफ यू हैव पॉलिनोमियल्स. ओके, सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर इन केस ऑफ रेशियो टेस्ट व्हेन योर nth टर्म इज अ पॉलिनोमियल. ओके, चलो, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेल मी द आंसर फॉर दिस. 3 sin x प्लस 2 cos x. okay? तो कभी भी अगर आपको दो सीरीज fx और gx का एक्सपेंशन निकालना हो तो बहुत आसान है. आपको दोनों का अगर एक्सपेंशन सेपरेटली पता है, यू कैन वेरी इजीली राइट द एक्सपेंशन ऑफ sin x इज, it is an odd series, so the expansion is this way with odd powers. ठीक है, and cos x is an even series, so the expansion is with even powers and so on. तो अब आप देखो, तो अगर आप इसको अरेंज करते हो थोड़ा सा तो इट विल कम with no power, it is 2, then 3x minus x square. ठीक है, 2 and 2 factorial, so you're getting x square and this will be x cube by 2 and so on. Okay, so what is the answer which is matching your observation? It's A. Okay, so easy question, easy approach. चलो, series, this series summation n is equals to 0 to infinity 1 by n factorial converges to what value? Okay, so if it is not visible, I have written here the series again. So where this series will converge 1 upon n factorial? ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हाउ आर यू गोइंग टू चेक वेयर द सीरीज इज गोइंग टू कन्वर्ज. ये कई बार आपको क्या होता है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखने के लिए यू हैव टू राइट द nth टर्म. Sometimes they give you the nth term and you have to determine the convergence and divergence. तो आप कई बार directly using this you cannot find out. So you just expand this series. So 1 upon n factorial, when you expand, for n is equals to 0, 1 upon 0 factorial is 1. 1 upon 1 factorial is 1, then 1 upon 2 factorial is 1 upon 2, then 1 upon 3 and so on. Okay, so this is the series for which you have to find the sum. Now ये जो एक्सपेंशन है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, इसको देख के ही आपको समझ आना चाहिए कि e पावर x जो है उसका एक्सपेंशन भी कुछ इसी तरह दिखता है. इट लुक्स लाइक 1 प्लस x बाय x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, x e power x expansion, right? So if you put x is equals to 1 here, what you get is e is equals to 1 plus 1 by 2, 1 plus 3 factorial and so on. So this series is basically an expansion of e power 1. ठीक है, तो e, if you put instead of x you put 1, this is what the series will look like. That's why the series is going to converge to e, and that's the only reason why it has been told to you कि जो वो 6-7 series हैं वो आपको याद होना चाहिए. Okay, the series sin x, cos x, e power x, 1 plus log s, 1 minus log x. Chalo, now find the expansion of fx given as integral 0 to x e power minus t square by 2. We'll do this question and then we will do that question just to have your understanding first here. Okay? Okay, now look at this question first. The Taylor series expansion for this, you have to tell me the answer. ये question हमने class में भी solve किया है. We have directly solved this question in the class. Try to find the answer.
Tell me which is the correct answer. तो ये देखो sin x का अगर आप expansion x is equals to pi के about लिख दो, then and if you try to write this sin x expansion in terms of x minus pi, okay, so if you want to write it in x minus pi, so we'll just write it as x minus pi plus pi. So this will become sin pi plus x minus pi. ठीक है, so sin pi plus, okay Ashok, I'll explain, wait a minute. देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 upon n फैक्टोरियल को अगर आप वापस से n is equals to 0 to infinity if you expand, so you write 1 upon 0 factorial, 1 upon 1 factorial, 1 upon 2 factorial. ठीक है, तो instead of n you are just substituting the values of n. Okay, so this is 1 upon 3 factorial and so on. So 1 upon 0 factorial is 1. ठीक है, 1 upon 1 is 1, then 1 upon 1 factorial again 1. I'll write it like this so that you understand it. ओके, सो ई पावर एक्स के एक्सपेंशन से आप इसको जब कंपेयर करते हो तो ई पावर एक्स का एक्सपेंशन इज लाइक दिस. ओके, so this is the expansion of e power x. So if you put x is equals to 1, this becomes e is equals to 1 plus 1 by 1 factorial, 1 by 2 factorial and so on. तो यही तो आपकी सीरीज है जिसका आपको सम निकालना है. So this is the sum. So the sum converges to e. Okay. Now look at this sin x का एक्सपेंशन. ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है. तो आप जो sin x है, if you want to expand it about x minus pi, so you will write it as minus sin x minus pi. ठीक है, pi plus theta is minus sin theta. So now if you know the expansion of sin x, instead of x sin x you can write it as minus sin x minus pi. तो sin x का एक्सपेंशन क्या था? sin x का एक्सपेंशन है x minus x cube by 3 factorial, x power 5 by 5 factorial and so on. So instead of x you can just write this as x minus pi cube by 3 factorial, x minus pi to the power 5 by 5 factorial and so on. Okay, so this and this are equal, just as you are writing instead of x minus pi and a minus sign is being inserted here. So the expansion of sin x upon x minus pi can also be written as the expansion of minus sin x minus pi upon x minus pi. तो ये जो आपका एक्सपेंशन है, अगर आप इसमें से x माइनस पाई कॉमन ले लेते हो तो यू गेट माइनस प्लस x माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल माइनस x माइनस पाई पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. राइट, तो अब आपका जो एक्सपेंशन इज दिस. ओके, कैसे किया? इट्स वेरी इजी. जस्ट why we are doing this is so that you are saved from expanding the complete in terms of pi, और फिर अगर आप कैंसिल करते तो आंसर यही आता. बट सिंस ये जो आंसर आपके ऑप्शंस हैं दे आर इन द पावर्स ऑफ x minus pi, that's why we have converted it into x minus pi. Okay, okay, let fx is equals to e power x plus x square for real x. From among the following, choose the Taylor series approximation of fx around x is equals to 0, which includes all power of x less than or equal to 3. ठीक है, तो up till the power 3 of x power 3 you have to find the expansion. Try it out. It's very easy to find the expansion now.
e पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है द टेलर सीरीज एक्सपेंशन fx about some point a will be f of a plus x minus a to the power into f dash a x minus a square f double dash a 2 upon 2 factorial and so on, ट्रिपल डैश a अपॉन 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से एक्सपैंड करना है. सो a हियर इज 0. So if you find f of 0, that is 1, then if you find f dash 0, you have to find, so you'll just differentiate this. So you will get ex plus x square 2x plus 1. Now put x is equals to 0 here, so you'll get again 1. Again f double dash 0 अगर आपको निकालना है तो आप इसको फिर से differentiate करो. So you will get this value here as 2x plus 1 whole square plus 2 into e power x plus. अब वापस से आप इसको x is equals to 0 put करो. So what you are going to get here is 3. Okay, this is becoming 1 and this is 2, so you'll get 3. f triple dash 0, तो इसको अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करते हो, so this becomes 2x plus 1 whole square plus 2 into 2x plus 1 plus differentiate this complete 2x plus 1 whole square plus 2 here, so you'll get 2 into 2x plus 1 into 2. ठीक है, वापस से x equals to 0 आप पुट करोगे तो this is 4 and this is 3. ठीक है, ये this is becoming 1 and 2 plus 1 3 and this is 4, so this is 7. तो अब आपके जो सीरीज एक्सपेंशन है f x about x is equals to 0, a is equals to 0, it will become first f of 0 is 1 plus x into f dash a is also 1, then f x minus a square, that is x square f double dash is 3 by 2 factorial plus x cube, the coefficient is 7 upon 3 factorial. ठीक है, तो अब अगर आप इसको चेक करो कि किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग योर ऑप्शन सी. थोड़ा सा लेंदी हो रहा है जस्ट बिकॉज इट इज नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन, इट इज हाइब्रिड फंक्शन. अगर आप इसको इस तरह से ब्रेक करके करो e पावर x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, तो e पावर x का एक्सपेंशन और e पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट, then that will turn out to be a little more difficult than this. ठीक है, तो it is better to find the expansion in this way. Yes Ashok, your answer is right. Okay, next question, let us see this question. Find the limit. ठीक है, तो अब लिमिट के ऊपर हम आ गए हैं, कुछ बेसिक से लिमिट के क्वेश्चन है and then we will have a higher level of questions on limit. Try to find the limit of this expression x cube minus cos x upon x square plus sin x square. Find the solution for this. तो अगर आप इसके लिमिट निकालने की कोशिश करते हो, अगर आप इन्फिनिटी रखते हो, सो दिस बिकम्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. Now whenever you have some polynomial upon polynomial, directly cancel the highest power of the polynomial. So when I take here x cube common, so this will be 1 minus cos x by x cube and this will be x square 1 plus sin x by x whole square. ठीक है, तो ये this will, here it is left with x 1 minus cos x by cos x upon x cube. Now if you put the limit, so this is infinity. Okay, so this limit is tending to infinity. 1 minus cos infinity by infinity upon 1 plus sin infinity by infinity whole square. ठीक है, यही हो रहा है आपका. तो अब आप देखो, अगर आप ये this cos infinity by infinity is will give you a value equals to 0.
and this sin infinity by infinity will also be a value 0. This is not 1. ठीक है, 1 नहीं है इसका value, because the limit when x tends to infinity, sin x by x is 0. ठीक है, it's not 1, because sin infinity मतलब sin of a very large number. Now the sin value lies between -1 to 1, and that's why that will be a definite value between -1 to 1. But in the lower portion you have x which is tending to infinity, so a fixed value divided by a very large number will give you 0. ठीक है, similarly cos x का भी same ही चीज है, the limit will be 0. So if you see, the limit tends to infinity. Okay, the limit tends to infinity. It does not tend to any fixed value, but infinity is also an accepted value of limit. Now the next question, with a 1 unit charge in B, what is the change in X? Okay. In the solution of the system of equation x plus y is equals to 2, 1.01 x plus, okay, how are you going to approach to this? 1 unit change in B, what is the change in X? दो इक्वेशन आपको दे रखी है, x plus y is equals to 2 and the other equation is 1.01 x plus 0.99 y is equals to b. चेंज इन b दे रखा है, चेंज इन x निकालना है. नो आइडिया, नो प्रॉब्लम. देखो, अगर आपको चेंज इन b दे रखा है and you have to find the change in x, but the equation also contains y, ठीक है, ऐसा कभी भी हो रहा हो, you have two equations, you just eliminate y and find the equation with x and b. ठीक है, जब आप y को eliminate कर दोगे तो equation will be left in x and b. Okay, so how to eliminate y? So I'll multiply this first equation with 99 by 100 and subtract the two equations so that I get the value of I get eliminated y. So this will give me 0.02x is equals to b minus 2 into 99 by 100. This is what I'm going to get. ठीक है, right? This is what I'm getting here. Now change in b is given and change in x is asked. So whatever, when there is a question about change in two values, that means definitely you are asking about differentiation. ठीक है, because जो आपका ये होता है dy by dx, वो भी क्या होता है, that is change in y with respect to x. तो यहाँ पे आपको dx by db निकालना है, change in x with respect to b. So just differentiate this equation with respect to b. So I'll get 0.02 dx is equals to db. ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है. 0.02 dx is equals to db. So there is 1 unit change. ठीक है, या तो इसको आप इस तरह से लिख लो डिफरेंशियल फॉर्मेट में, या इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है 0.02 डेल्टा x is equals to डेल्टा b. एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम योर मल्टीपल डिफरेंसेस. ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल मेथड में ये बताया जाता है ना, तो वो वहीं से ही आया है डिफरेंशिएशन. तो डेल्टा b इज 1, यू हैव टू फाइंड डेल्टा x, दैट विल बी 0.02. ठीक है, या फिर dx is equals to 1 upon 0.02. That means the answer is 50. Answer is 50. Okay. Okay, is that clear? ऐसा कभी भी हो तो this is the only approach you can follow. Okay, eliminate the third variable and find the equation amongst the two. ठीक है, ये तो बहुत easy limit है. Tell me the answer for this limit. डायरेक्टली आप इसको देख के बता सकते हो. व्हेन यू पुट द लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, इट इज कन्वर्टिंग 0 by 0 फॉर्म. तो 0 by 0 फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल्स लगा सकते हो, या फिर यू कैन डायरेक्टली फाइंड द लिमिट एज बाय चेंजिंग इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब दिस
Now this complete is sin theta upon theta, where limit x theta tends to 0. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2. एल हॉस्पिटल्स लगाओगे तो भी वही बात है, ठीक है. कई कई बच्चे पूछते हैं कि ये जो एल हॉस्पिटल्स होता है वो तो तभी लग सकता है जब x टेंड्स टू 0 हो या x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, बट ऐसा कुछ नहीं है. नो अशोक, इट इज आंसर इज 2, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स लगाते हो तो साइन का डिफरेंशिएशन विल कम आउट 2 cos x minus pi by 4 and in the denominator it will be 1. Now put limit x tends to pi by 4. तो आप pi by 4 रखोगे तो 2 cos 0, that means 2. Okay, yeah, limit of sin x by x is 1. Okay, तो आपका 2, आप इसको कन्वर्ट करो. हमेशा याद रखो the limit sin theta by theta when theta tends to 0 is 1. Next question. Okay, no problem Ashok. Just make sure that you do not make such mistakes in your exam, क्योंकि वहां भी हम बहुत जल्दी में होते हैं और वहां पे भी ऐसी मिस्टेक करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. Okay, equation of the line normal to this function you have to find out. Equation of the line normal to this function. So how you can do this? देखो दोनों ही तरीके से कर सकते हो. The one thing is you have this point 0,5. ठीक है, तो अगर आपको कभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो you can simply satisfy the points 0,5 and if sometimes it happens कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा बचेगा जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, और if there are more option then you have to find out the slope also. देखो 0,5 अगर आप सेटिस्फाई करने जाओगे तो a is not satisfying this point, क्योंकि उस पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो वो तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए. योर ऑप्शन D is also not satisfying 0,5. Now what all is left is option B and C, which are both satisfying your 0,5 point. तो अब आपको यहाँ पे स्लोप निकालना पड़ेगा. You will find dy by dx of this function. So you will get x to the power 1 by 3 minus 1 by 3. Okay, at x is equals to 0, this value of dy by dx is minus 1 by 3, because this is minus 2, minus 1 by 2, so this will become minus 1 by 3. पर ये slope किसका है? This slope is of tangent. Slope of tangent at x is equals to 0. But you want slope of normal. Slope of normal at x equals to 0. तो आपको ये पता होगा slope of tangent into slope of normal is minus 1, that is m1 into m2 is equals to minus 1, क्योंकि दोनों perpendicular lines हैं. So you will get the slope of your normal as 3. Okay, because m1 is minus 1 by 3, so you get your slope as 3. So the equation is D. ठीक है, क्योंकि slope आपका 3 है. Okay, is that clear? कई बार आपको डायरेक्टली पॉइंट सेटिस्फाई करने से भी आंसर मिल सकता है. अगर द ऑप्शंस आर डिजाइंड नॉट डिजाइंड केयरफुली तो कई बार आपका डायरेक्टली ऑप्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑल्सो यू गेट द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट यू शुड ट्राई टू अप्रोच थ्रू दैट पॉइंट मेथड, क्योंकि कई बार आपका टाइम वहीं पे बच जाएगा. अगर नहीं है तो आप फिर डेरिवेटिव. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू डू नॉट फॉरगेट कि वो नॉर्मल का पूछा है, टेंजेंट का नहीं. Okay, again this is a direct limit and you can directly answer this. So you look at this limit. If you remember, इसका एक direct result है आपके पास. This limit, okay, this is limit tending to 1 to the power infinity. This limit gives a value equals to e to the power a. e to the power minus a, because अगर आप इसको डायरेक्टली अगर आपको याद नहीं है,
if you do not remember directly, you can take the log of this, you can take the log, this will become, और वहां से solve कर लो, no problem. So this will be 2n 1 log of 1 minus 1 by n. ठीक है, और वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, log of 1 minus 1 by n. ठीक है, 2 power n has come in the front because of the property of log. ठीक है, log आपको बेसिक्स पता होगा. Now this log 1 minus 1 by n, and this I am writing as 1 by n. ठीक है, limit n tends to infinity. Now when you put this limit n tends to infinity here, you are getting 0 by 0 form. You can apply the L'Hospital's rule and you can find the limit. तो आप ऊपर का differentiate करोगे, it will become 1 upon 1 minus 1 by n and 1 by n square, and this will also become 1 by n square with a minus sign. So this will get cancelled. Now you put the limit n tends to infinity, so you are getting limit n tends to infinity. This will become minus 2 upon 1. ठीक है, तो minus 2 is coming out as your limit. This is log y. पर आपकी limit is y, not log y. So you will take an anti-log, तो y it will become e to the power minus 2. And this is the direct result. इसका direct result है, if you have this limit n tends to infinity 1 minus 1 by n to the power an, you can directly write it as e to the power minus a. आप डायरेक्टली इसको लिमिट को लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, ये यहीं से डिराइव्ड रिजल्ट है. दिस रिमेंबरिंग द आंसर विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम. Next question, a non-zero polynomial fx of degree 3 has roots 1, 2 and 3. Which of the following must be true? इनमें से कौन सा should be definitely true? तो ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, दे आर अ बिट कंफ्यूजिंग, बट यू शुड क्विकली रिमेंबर कि पूछना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, जब भी आपको इस तरह से ग्रेटर देन जीरो ऑफ टू फंक्शन, two values greater than 0 less than 0, definitely it means they are asking you about the derivatives and its multiplication. ठीक है, तो जो हमारा बेसिक डेरिवेटिव्स है उसको आप मत भूलो. डेरिवेटिव्स and how they when they have a sign negative and positive in that sense. तो ये जो आपका वैल्यू आपको दिया है 1, 2 और 3. ठीक है, so f of 0 they are asking. So f of 0, that means it will lie somewhere on the left hand side of 1, and one is f of 4 which is on the right hand side. ठीक है, कितने आपके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं? It is the roots are 3. That means 3 roots. That means it can be like यहाँ पे maxima होगा, यहाँ पे minima, then maxima, and then like this. Okay, or otherwise it can happen that here is a minima, a maxima, a minima. Okay, so you have to judge how you are going to tell about the signs. So look at this, 1, 2, 3, this is your number line. Here you have 0, here you have 4. तो ये जो basic आपका rule है, the basic rule of your function, what it says is whenever there are roots in between, definitely the function is changing its value, it is changing its signs. ठीक है, तो here it is, then it is getting minima, it is getting maxima, and this way. Then definitely again if you try to check the other way out, तो इस तरह से इसका जो slope होगा, it is like this, maxima, minima. So the product of f of 0 and f of 4 is coming out always greater than 0, क्योंकि या तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव नेगेटिव है. Okay, so in both of the cases it will come out as greater than 0.
Next question here. Sin theta, this is a determinant given for your function of theta, and f dash theta denotes the derivative of with respect to theta. Which of the statements are true? There exists theta between pi by 6 to pi by 3 such that f dash theta is 0. There exists theta between pi by 6 and pi by 3 such that f dash theta is not 0. Okay, so you have to check. Okay, you have to check how you are going to check this value. Okay, Ashok, I'll explain. No problem. Just have this question again and then I'll explain you. Tell me the answer for this. How are you going to check this question and how are you going to predict that what will be the true statement? ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा होगा, अगर आपको याद हो तो आपको the means value theorem have been explained to you, Rolle's mean value theorem and Lagrange's mean value theorem, तो ये उसी का पार्ट है. What does the theorem say? The theorem says, Rolle's mean value theorem क्या बोलता है? The Rolle's mean value theorem says that if you have f of a equals to f of b, then and the function is continuous and differentiable function for closed interval, continuous for closed interval ab and differentiable for open interval ab, then in that case there lies a c such that f dash c is equals to 0 and the c is between a and b. तो आपको यहाँ पे चेक करो whether this function f theta is satisfying this criteria. So if I put f, I find f of pi by 6. ठीक है, so this will become sin pi by 6, cos pi by 6, tan pi by 6 and this is a determinant, so the value will come equals to 0. है ना, क्योंकि दोनों रोज सेम हो गई है. f pi by 3 आप निकालोगे तो sin pi by 3 cos, तो फर्स्ट और थर्ड रो आपका सेम हो रहा है, definitely the determinant will be 0. So f of a is equals to f of b and this function is containing sin, cos and tan, definitely the function is continuous and differentiable in this interval pi by 6 to pi by 3, क्योंकि tan भी in thus continuous होता है at pi by 2 which is not in this interval, that's why the function is continuous and differentiable. So the statement says there exists theta in between this such that f dash theta is 0 and this is right by Rolle's mean value theorem, because ये जो function है वो Rolle's mean value theorem के तीनों चीजें satisfy कर रहा है. Okay, and the second statement, there exists theta between pi by 6 to pi by 3 such that f dash theta is not equals to 0. Definitely, ठीक है, Rolle's mean value theorem बोलता है there will be at least one c. Okay, the other values do not need to be 0. Other values of this function do not need to be having f dash c equals to 0. सिर्फ एक ही value होगी, तो both the statement 1 and 2 are true. Okay, both the statements are true. Is there any confusion here? चलो, let's move on. देखो, you were asking about this graph, Ashok. I'll tell you this graph again. देखो, जो भी आपका, yes, Ashok, what is the problem? Tell me. So whenever you have your roots of equation like this, ठीक है, तो जो रूट्स आपके आ रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 1, 2 and 3, डेफिनेटली, तो आप अगर आप देखोगे योर फंक्शन मस्ट बी हैविंग 0 वैल्यूज लाइक दिस. ठीक है, तो बीच में कहीं पे मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा ऐसा बन रहा होगा और या फिर इस तरह से होगा. तो 0 लाइज हियर एंड 4 लाइज हियर, so you are checking the product. Yes, Ashok, I'm telling you, you are checking the product of f of 0 and f of 4
ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, this function, when it was, if it is in this way that it is starting from a negative value on the left hand side and then it's having its zeros, तो f of 4 का value positive है, f of 0 का negative है, and similarly this for the other side, f of 0 is negative and f of 4 is positive. So you are both the case, your product is coming out as negative. Okay, अभी ग्राफ समझ आया अशोक? Did you understand the graph? Let's have a look at this question. The function is defined in the closed interval -1 to 1. The value of x in the open interval for which the mean value theorem is satisfied. For which the mean value theorem is satisfied, you have to tell the value of x. फाइंड आउट कैसे करोगे आप? जैसे आपको अभी बताया मैंने कि मीन वैल्यू थ्योरम, एक तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है एंड देयर इज अ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो अब आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं. इन रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दो कॉमन कंडीशन है. दे आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस. ठीक है, कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b. ठीक है, this is the only condition common between them, but Rolle's mean value theorem में एक additional condition है, that is function at a should have values equal to the function at b. okay, so Rolle's अगर ये condition satisfy होती है तब Rolle's mean value theorem कहता है that your there exists a value c, कम से कम एक value of c there will be such that the derivative is 0. ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक point of maxima और minima locally will explain there, will exist there. okay, this is Rolle's mean value theorem. ये additional condition है. In Lagrange's mean value theorem, these are the only two conditions, and the Lagrange's mean value theorem says that if these two conditions are satisfied, then there exists a point c such that the derivative of that point f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. ठीक है, तो ये दोनों में बस इतना ही अंतर है. तो आपको चेक करना है कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम लग पाएगी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो कैसे चेक करोगे? चेक द वैल्यू एट -1 and check the value at 1. So if you check the value at -1, you are getting value -1, and if you check the value at 1, you are getting value 1. So this condition is not satisfied. ठीक है, तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम तो नहीं लग पाएगा, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगा. ठीक है, क्योंकि लैग्रांजेस का और कोई थर्ड कंडीशन है नहीं. सो यू विल अप्लाई द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. सो जस्ट you will write f dash c is equals to f of 1 minus f of -1 upon 1 minus -1. ठीक है, so this value f dash c is minus 2x plus 3x square is equals to 1 minus -1 upon 1 minus -1, that is 2 upon 2, that is 1. So you have 3x square minus 2x plus 1, sorry, minus 1 is equals to 0, minus 1 is equals to 0. अब आप इसको solve करो, find the value of x. So you will get the value of x as equals to, one is 1 and the other one is 1 by 3. -1 by 3, right? तो ये दो वैल्यू आपकी x की आ रही है. You can solve this by splitting the middle term, या जो भी आपको अच्छा लगे, Sridharachary's method. You can just find it out. Now these are the two values, 1 and -1 by 3. You cannot take 1. ठीक है, you cannot take 1 because 1 lies on the boundary and this value is, the value of c is always between a to b. ठीक है, it is not equals to a or b. So you will have this value x is equals to -1 by 3 as your answer, where this
function satisfies the Lagrange's mean value theorem. ठीक है, the value where the function satisfied is -1/3. Okay, is that clear? Next question. Function is given 2x power 7 plus 3x minus 5. What is the which of the following is a factor of fx? fx का फैक्टर आपको बताना है. तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं इसमें एक ही अप्रोच है. अगर आप या तो फिर पूरा डिवाइड करने बैठो, इसके फैक्टर्स निकालो. अदरवाइज when there is one factor of fx, then you can write that function factor into gx. Okay, so this value x is equals to a will satisfy this function. That means f of a will be 0. तो जो भी factor होगा that will satisfy your equation fx and it will give you a result 0. So how are you going to find it out? So if I take the option A, x cube plus 8 is equals to 0, that means x is equals to -2. Okay, so x is equals to -2. If you put in this fx, that is not giving you 0 answer. ठीक है, -2 अगर आप पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा. If you take second option x -1, so you will get x is equals to 1. Put x is equals to 1 in your function, you will get a 0 and this will let you know that your answer is B. ठीक है, इसके लिए ये तरीका ही सबसे इजीएस्ट अप्रोच है. पूरा डिवाइड करके दूसरा पॉलिनोमियल निकालने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. Now find out the points of local maxima and minima of the function 0 to 6, which is between 0 to 6. Okay, this is x cube minus 6x square plus 9x plus 15. ठीक है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है. Maxima and minima points, tell me what are the values of x where the function is max and where the function is min. Definitely when you have to find the maxima and minima, you just differentiate that function, equate it equals to 0. Ashok, this PDF you will get at the end of the lecture in the Lead Gate channel Telegram group. ठीक है, so at the end of the lecture I'll share the PDF on the Telegram channel. If you are not following the Telegram channel, then do follow it. It is by the name Lead Gate. Okay, and the link is also there in the description box. You can check the link and join the channel. I'll share the PDF after the lecture. Okay, so you take f dash x, you will get 6x minus 12. Sorry, I've already. So this is f double dash x. Okay, so for finding the critical points आपको पता होना चाहिए. How you find the critical points? F dash x is equals to 0 आप put करो, then you get the critical point. So you put this f dash x equals to 0, that is x square minus 4x plus 3 equals to 0. तो क्या क्या point आ रहे हैं आपके? X is equals to you are getting as 3 and 1. Okay, x is 3 and 1 you are getting here. And if you want to check if you want to check where is the maximum and minima, there are two methods. F double dash x को check कर लो. Okay, so I'll check f double dash x at 1. So this will give me -6, which is less than 0. That means it is a maxima. And f double dash at 3, that is giving me a value +6 greater than 0, that is a minimum. ठीक है, इसके अलावा एक और method, you just draw the line diagram of f dash x. ठीक है, तो f dash x 0 कहाँ पे हो रहा है? f dash x is 0 at 1 and 3. Right? f dash x is 0 at 1 and 3. अब आप देखो, take any value other than 1 and 3. So I am taking a value 0. ठीक है, तो when I put a 0 here in f dash x, the value comes out as 3. ठीक है, तो positive value comes out. So the signs will be positive, negative, positive. You can directly put the alternate signs in the f dash x.
So the function is first positive, then negative. That means here you have a maxima, and here the values were first negative. Negative मतलब decrease हो रही थी और फिर increase हो रही थी. So this point is a minimum. Okay, both the results will give you the same thing. Okay, so this positive negative means the values were increasing and then they were decreasing. So that means there is a peak maxima, and here negative to positive, it means there is a minima. ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स आ गए. मैक्सिमा इज एट 1 एंड मिनिमा इज एट 3. Now this question, equation is given, you have to find one root is also given 3 plus 4i. What is the other root? ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है. एक आपको रूट दे रखा है 3 plus 4i. What is the other root? You have to tell other roots of this equation amongst the following option. How are you going to approach? या देखो, अब अगर आप इससे डिवाइड करके दूसरा पॉलिनोमियल, तो वो सब नहीं कर सकते हैं हम, because this will require a lot of time. Definitely when you see that there is a root in a complex form, that means its pair will always exist. ठीक है, because complex roots always come in pair. Yes Yogesh, you are right, complex roots are in pairs. ठीक है, अब आपने ये चीज आपको पता थी, दैट्स वेरी गुड. यस, तो अब योगेश, हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? ठीक है, अब अगर आप इसको फिर से पूरा डिवाइड वगैरह करके या कुछ करोगे तो भी नहीं होगा काम. यू शुड रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलिनोमियल. whenever you have a third degree polynomial like this, ax cube bx square cx plus d equals to 0, in that case ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट विल बी माइनस डी बाय ए. ठीक है, देन सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय ए एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब आप क्या करो, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट. यस यस योगेश, तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट टू जो होगा, 3 रूट है, so this product of root you can definitely find the third root from here itself. The third root I am writing x3 is equals to minus into minus 50 by a is 1, so you'll get your x3 as 50 upon, this is 9 plus 16 25. ठीक है, तो sum of roots and product of roots वाला property use करके it's very easy. Sum of root also you could have used, वहां से भी आपको मिल जाता. The answer would be 2, same thing. Next question, maxima and minima of the function fx 2x cube minus 15x square plus 36x occurs at. काफी easy question है, तो ये तो आप कर सकते हो. Tell me the answer. फिर से आप f dash x निकालो, check the value. Okay, that's good Yogesh. This session is specially for the students who haven't seen calculus, because calculus हमने पढ़ा होता है, but the thing is there are things which you may have forgotten, तो वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले. ठीक है, that's good, आपको हेल्प हो रही है, I am very happy for that. आप you put it equals to 0, so that means x square minus 5x plus 6 is equals to 0. तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आ रही है they are 2 and 3. ठीक है, अब आपको चेक करना है बस कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है. तो या तो आप f डबल डैश x निकाल लो, या फिर that line diagram of f dash x. तो f dash x is 0 at 2 and 3. ठीक है, so I'm checking at 0. At f dash 0 the value is positive 6, so I put alternate positive negative sign, so the values were increasing then decreasing, decreasing then increasing. तो 2 पे आपका आ रहा है मैक्सिमा, 3 पे आपका आ रहा है
मिनिमा। अगर इसमें आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। एफ डबल डैश वैल्यू एट 2 you check which is -1 which is less than 0 तो maxima, and f double dash at 3 you check this is +1 greater than 0 it is minimum. Okay, so both will give you the same thing. जो भी आपको जल्दी क्विक आप कर सको you should focus on that. So maxima and minima 2, 3 respectively. Again a question on maxima and minima. Function has its maxima at which value? ठीक है, तो फंक्शन आपको विजिबल अगर नहीं है तो द फंक्शन इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 36x plus 2 is your function. Okay, tell me where is the maxima for this function, whether it is -2, 0, 3 or both. फिर से क्या करोगे, you will just find out f dash x वापस से. Okay, you will get 6x square minus 6x minus 36. Put it equals to 0, so that is x square minus x minus 6. तो आपका जो values आ रही है that is 3 and 2. So it is x is equals to 3 and -2. Right? ये आपके values आ रही है. Now you have to check where it is a maxima and where it is a minima. तो कैसे चेक करोगे वापस से, you can either check f double dash x or line diagram of f dash x. I prefer this f dash x line because that's very easy. I put 0, I think I get that here a negative, this will be positive. So this is a maxima and this is a point of minima, so I got -2 is the only point of maxima. ठीक है, f double dash x से भी निकाल सकते हो, it does not matter, they will give you the same result. ठीक है, चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज योर डबल वेरिएबल. ठीक है, तो इस केस में यस योगेश राइट. ठीक है, ये जो डबल वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन है दिस इज इम्पोर्टेंट. इस पे आपको पूरा रिवाइज करना है वापस से, हाउ यू आर फाइंडिंग द मैक्सिमम मिनिमा ऑफ योर डबल वेरिएबल. Okay, let us look at this question. The function, if it is not visible, this is the function 2x square plus 2xy minus y cube. Okay, so you have to find amongst this which is the correct option, what is the stationary point, or whether there is okay, stationary point they are asking. So just check it, how you are going to check for a variable, double variable function. आपको पता है, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करोगे, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x and partial derivative with respect to y and equate them equals to 0. ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो and find the critical points. तो partial derivative with respect to x when you find, so this is equals to 4x plus 2y and partial derivative with respect to y is 2x minus 3y square. आप इनको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. ठीक है, पुट देम इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. सो इधर से आपके पास आ रहा है 2x plus y equals to 0 and here 2x plus 3y minus 3y square is equals to 0. तो एक वैल्यू तो आपको डायरेक्टली दिख रही है x, y 0, 0. ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई 0, 0. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द अदर वैल्यू जस्ट एलिमिनेट. ठीक है, so how we are going to eliminate and find it out, I'm going to put y is equals to minus 2x here and find out the value of x. So the value will come equals to 1/6 and minus 1/3. ठीक है, कैसे find किया, if you want I can show you the calculation again. How you are finding out this is 2x plus y is equals to 0 and 2x minus 3y square is equals to 0. दोनों साइमल्टेनियस है. यस योगेश, rt माइनस एस स्क्वायर से देखेंगे. ठीक है, तो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं 0, 0 एंड 1/6 minus 1/3.
अब आपको करना क्या है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। सो r इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा, इट विल बी 2. t is partial derivative with respect to y of order 2, so that will be equal to minus 6y, and s is partial derivative with respect to x and with respect to y, ठीक है। तो पहले आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपने x के साथ डिराइव किया है उसको y से डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली, या जो y से आपने डिफरेंशिएट कर रखा है उसको फिर x से डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली, इट डज नॉट मैटर, योर आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे r की वैल्यू आ रही है 2, s की वैल्यू इज, t की वैल्यू इज -6y and s की वैल्यू इज 2. Now you have to check the value of RT minus S square. Okay, check the value of RT minus S square for 0, 0. RT minus S square. So R is 0, T is also 0. So it will be -4. Now this value is what? Less than 0. ठीक है, तो RT minus S square का आपको फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, that I'll write on the top because there is no space here. देखो RT minus S square, if it is less than 0, in that case this is, there can be two cases, 3 cases हो सकते हैं वैसे तो पहला केस है कि R is greater than 0 and दूसरा केस है R is less than 0. और RT minus, sorry, this is for less than 0, so I have to write it this. This is for greater than 0. Wait a minute. If RT minus S square is greater than 0 and R is greater than 0, that means there is a minima, and RT minus S square is less than 0, greater than 0 and R is less than 0, that means it's a maxima. RT minus S square is less than 0, then this is a saddle point, or you can say a stationary point, ठीक है। और RT minus S square अगर आपका 0 हो जाए, that means you cannot find the solution, that means your test has failed, ठीक है। तो this is giving you a stationary point -4, 0, this is a saddle point, ठीक है। आपका आंसर तो यही आ गया है, यू हैव गॉट योर आंसर ऑलरेडी, स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो आपका आंसर 0, 0 और 1/6, -1/3 पे ही आ चुका है. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू फॉर योर रिविजन. ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू. अगर आपसे मैक्सिमम मिनिमम या सैडल पॉइंट पूछा जाता तो आप कैसे करते. तो आप देखते हैं कि दिस इज गिविंग यू अ सैडल पॉइंट एट दिस 0, एंड अगर आपको चेक करना है एट 1/6, -1/3, again you will find RT minus S square. So R is 2, T is -6 into -1/3 will be 2, minus S square is giving you 4. तो ये आपका 0 आ रहा है. तो इस पॉइंट पे 1/6, -1/3 पे योर टेस्ट हैज फेल्ड. यू कैन नॉट टेल वेदर दैट दिस पॉइंट इज अ मैक्सिमा और मिनिमा. ओके, बट अगर लेस देन 0 है तो दैट्स अ सैडल पॉइंट. स्टेशनरी पॉइंट पूछा था आपसे, तो स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव निकालने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपली यू कैन फाइंड first partial derivative 0, first partial derivative with respect to y 0, and find the answer. Okay, RT minus S square is required only for finding the maximum, minima and the saddle points. Okay, is that clear? Look at this next question. If e power y is equals to 1 by x, try to find the solution for this. Okay, Ashok, my schedule is here at 12. ठीक है, इस 12 PM we start our schedule here. अभी हम मैथमेटिक्स का काफी कुछ कवर कर चुके हैं, but there are still few important topics left.
tomorrow we are having your differential equation. 2 दिन में differential equation we will cover. Then you will have your complex function after that. फिर एक पूरा complete practice session रखेंगे starting from linear algebra to all the topics which we have covered, probability and all these topics. And after that we will have Laplace transform. ठीक है, तो गेट से पहले तो एक बार वापस से हो जाएगी चीजें, रिवाइज भी हो जाएगा आपका क्वेश्चंस के साथ डेफिनेटली. एंड अदर देन दिस ऑन स्पेशल, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लाइव क्लासेस के अंदर आई टेक योर स्पेशल लाइव क्लासेस विच आर एब्सोल्युटली फ्री. इफ यू आर नॉट ऑलरेडी attending them, you can attend them using my code ARO10. just download the Unacademy learning app और वहां पे लाइव क्लासेस के अंदर जाके you can search my name आरोही, so you will get my profile. आप वहां पे फॉलो करोगे तो जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको आने लगेंगे. And you can use this code. You also try to share it with as many friends as you can. ताकि it is important that you share this content because the content is created as per your need and demand. So if you need this content, then you should share it and also like it so that you get more content like this. So you can follow me there with my name. And there also we have your classes from 3:30. तो मैथमेटिक्स हम वहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं. अगर आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो वहाँ पे भी हम कवर कर चुके हैं टॉपिक्स बहुत सारे. एंड देन फ्रॉम 5 आई एम टेकिंग योर लेक्चर्स फॉर एप्टीट्यूड देयर, ठीक है, 15 days एप्टीट्यूड टू क्रैक योर गेट and 15 days are much more. Okay, yes Yogesh, that's right. Okay, others also please try. E power y is equals to x to the power 1 by x. You have to find where is the maxima and the minima for this. तो simply देखो इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपके लिए अच्छा होगा. I am taking log, so I'll get log is equals to 1 by x ln x. ठीक है, तो y is becoming 1 by x ln x. इसको डिफरेंशिएट कर लोगे आप तो y dash, that is first order differentiation, will become 1 by x ln x upon 1 by x square. Now you put it equals to 0. So you get 1 by x square 1 minus ln x is equals to 0. तो देखो 1 by x square cannot be 0 because it will make the function what? It will make the function infinite. तो x की value we cannot take any random value. So this 1 minus ln x has to be 0. That means x is equals to e should be there. But maxima है या minima ये कैसे check करोगे? Double derivative ले लो या फिर as I always say line diagram of f dash x is very nice in this case. तो f dash x जो आपका है this is your f dash x or y dash. So e is 2.3 something. So I am just putting a value which is less than e or greater than e. So I am putting the value of 1 instead of x. So 1 lies here, right? So when I put a value of 1, this becomes positive value and this is negative. ठीक है, 1 आ रहा है यहाँ पे value, that is positive. ठीक है, तो positive से negative, that means e is having a maximum. चाहो तो डबल डिफरेंशिएट कर लेते, नो प्रॉब्लम. डबल डिफरेंशिएट करते थोड़ा सा लंबा जाता डिफरेंशिएशन, बट नॉट अ प्रॉब्लम. बट इस इन केस में पुट करके भी देख सकते हैं बिकॉज ऑप्शंस. ओके, यू इफ यू वांट टू चेक, आप यहाँ से डायरेक्टली भी चेक करना चाहते हो, ये आपका फंक्शन ऑफ y है. इफ यू पुट द वैल्यू e इंस्टेड x is equals to e, if you put this becomes 1, your value of y comes 1 by e. If you put value 1 by e, ठीक है, अगर आप ऑप्शन से जाओगे ना तो होगा क्या? If you put 1 by e, y will come equals to e minus e, sorry, at x equals to e at x equals to minus e. ठीक है, तो आप यहां से भी देख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए. हाँ, that's right योगेश, but the thing is कि you should know that the critical point is only at x is equals to e. तो उसके लिए एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो मिनिमा इज एट y is equals to x is equals to
e पावर -1, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, y की वैल्यू आ रही है -e, और इसके लिए आ रही है y की वैल्यू 1/e। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यू डू नॉट नो द क्रिटिकल पॉइंट, तो एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर क्योंकि श्योरिटी के लिए तो एक बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। राइट, कन्वेंशनल मेथड इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज आपके जितने भी इफ एंड बट्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। यू फाइंड दैट दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डबल डिफरेंशिएट मत करो ना, एफ डैश एक्स का लाइन डायग्राम बनाओ, हमेशा सही आंसर देगा आपको। ठीक है, तो you got your answer, maxima at x is equals to e। डबल डिफरेंशिएट में ज्यादा टाइम जाएगा। चलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बिटवीन द इंटरवल 1 to 6। ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 to 6, तो फंक्शन है आपका x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। इंटरवल इज क्लोज्ड 1 to 6। टेल मी द आंसर। फिर से क्या करोगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए? यू विल फाइंड आउट एफ डैश एक्स, है ना, इक्वल टू 0 करोगे उसको, तो क्या आ रहा है? 3x स्क्वायर 18x 24। Put it equals to 0. So your value of x is coming out as x is 2 and ठीक है 3 and did I make any mistake? Okay, sorry, this is 8. Okay, so your values are 2 and 4 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाँ, x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? यस, ओके, यस योगेश, राइट। तो x वैल्यूज यू आर गेटिंग हियर एज 2 and 4। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे फंक्शनल, आपको चेक करना है वेयर इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यू चेक एफ डबल डैश एक्स, राइट। तो आपको एफ डबल डैश एक्स चेक करो या लाइन डायग्राम ऑफ दिस यू चेक। So what you get here, for suppose I put 0 here, so this is positive, negative, positive. I get a maxima here, a minima here, but do remember this is a local maxima and this is a local minima। ठीक है, local maxima, local minima का मतलब है within this 1,6 this function is giving you a curve where the tangent is having slope 0। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के अंदर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इट जस्ट मीन्स दैट एट 2 and 4 your tangent is having slope as 0, but the maximum and minimum value does not mean will be there। तो हमेशा आपको जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करना हो, you should always check for the local max and minima and at extreme points। ठीक है, तो चारों के लिए आपको चेक करना, क्योंकि मैक्सिमा 2 पे आ रहा है, तो यू चेक द फंक्शनल वैल्यू एट 2, फंक्शनल वैल्यू एट 1 एंड फंक्शनल वैल्यू एट 6। टू यस, क्लोज इंटरवल है इसलिए देखना ही पड़ेगा आपको, एंड हमेशा आपको क्लोज इंटरवल दिया होगा ऑलवेज। ठीक है, तो इन क्लोज इंटरवल डू चेक ऑन द एक्सट्रीम पॉइंट्स। अगर ये ओपन इंटरवल होता, if it was open interval, then also you have to check at the extreme point, because just after 1 and just before 6 also the values are the same, right? हमेशा आपको close interval ही देगा वो, because the function is continuous and differentiable। ठीक है, तो check the value at 2, check the value at 1 and 6, so you will get your answer at 6 as 41, right? At 6 I think, yes. At 2 you will get a value 8 minus 18 minus 10 plus 48 plus 5, around 21 I think you are getting। Okay,
and at 1 you are getting a value which is less than both of this, so the answer is actually 41. ठीक है, एक्सट्रीम पे ये क्वेश्चन बस इसीलिए है कि हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, और हम उसी पे जो भी वैल्यू आ रही होती है, जैसे 2 रखते हैं आप और 21 वैल्यू आती है, एंड यू मस्ट हैव केप्ट इट द आंसर एज 21, बट दैट्स नॉट करेक्ट बिकॉज द मैक्सिमा इज कैन बी एट एक्सट्रीम्स ऑल्सो. Yes, maxima at 6 is 41. Right. Right, Ashok. चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला. The function fx is given. ठीक है, they are asking अगर आपको लोकल मैक्सिमा चाहिए इस फंक्शन का, तो what is the value or the range of k? What is the range of k so that you have a local maxima at x is equals to 0? कैसे करोगे, टेल मी. देखो डेफिनेटली अगर लोकल मैक्सिमा चाहिए x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो वो x इज इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, तो आप अगर इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे तो x इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट अपने आप आएगा. आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको सेकेंड टाइम. यू हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन एंड पुट इट लेस देन 0 बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा. ठीक है, so at x equals to 0, if you want maxima, the double differentiation should be less than 0. So when you will double differentiate, तो सब में x का टर्म आएगा. The only term without x will be k square minus 4 into 2. ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन में. ठीक है, तो बाकी x equals to 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा. This is the only term which should be less than 0 so that you get a maxima at x equals to 0. Okay, Ashok, right. Okay, I'll rectify in the previous slide. Thank you for the correction. Okay, तो आप इसको 0 करो, लेस देन 0 करो एंड टेल मी द वैल्यू व्हाट यू आर गेटिंग. k स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, क्या आ रहा है k का रेंज? कैन इट बी इक्वल टू, कैन इट बी इक्वल टू और नॉट? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इक्वल टू हो सकता है कि नहीं, और व्हाट विल बी द वैल्यू, टेल मी. The answer here it is 25. Okay. या इट कैन नॉट बी इक्वल टू. ठीक है, देखो आप इधर यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया तो वो आपका बन जाएगा एक सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट मीन्स द पॉइंट वेयर द कर्व चेंजेस इट्स कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी, so it cannot be 0. So do not take the options which are having 0. तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वल टू साइन कैसे आ रहा है. तो यू विल ऑलवेज हैव लेस देन और ग्रेटर देन. So either it is A or C. What will be the answer? X square minus 4 k square less than 4. ठीक है, k square less than 4. That means k is between minus 2 to 2. Yes, your answer is C. अगर आपको रीजन आइडेंटिफाई करने में, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो भी कोई बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है. जैसे आपके पास आ रहा है k स्क्वायर लेस देन 4. ठीक है, तो हमेशा जब ये लेस देन वाली बात आ जाए ना, सपोज a स्क्वायर लेस देन सम पर्टिकुलर नंबर b, सो दैट मीन्स a विल बी बिटवीन माइनस b टू b. पर अगर ऐसा आ जाए a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b, इन दैट केस a विल बी ग्रेटर देन b एंड a विल बी लेस देन माइनस b. ठीक है, तो इनइक्वालिटीज बेसिकली अगर आपको चेक करना है तो आप रेंज को पुट करके भी चेक कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि लेस देन 4 रखना है तो माइनस 2 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करोगे तो वो 4 से कम होगी. ऐसा सोच सकते हो आप.
या फिर ये अगर आप याद रख लो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आता है तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो काफी इजी आ गया क्वेश्चन, ये तो गलत जगह पे आ गया है। नो प्रॉब्लम, टेल मी द आंसर। सिंपली द क्वेश्चन इज इजी। सिंपल सा लिमिट है, अगर आप 8 पुट करते हो तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो आप चाहो तो इधर यू कैन apply your L hospitals because it is forming a 0/0 form. So x tends to 8. When you differentiate, it becomes x to the power minus 2/3 upon 1. Put the limit 8. Now this is giving you a definite value. So this will be 8 to the power 2/3. That means 2 to the power 2, 4. तो 1 by, yes योगेश राइट। ठीक है, ऐसा लिमिट तो जल्दी हो जाएगा। ओके, दिस लिमिट व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर e to the power 2x minus 1 upon sin 4x। ठीक है, तो हमेशा जब भी लिमिट आए तो आपको ये जरूर देखना है कि एक बार चेक कर लेना कौन सा फॉर्म है। कई बार ऐसा होता है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता ही नहीं है। ठीक है, ऑल्दो इस केस में तो इनडिटर्मिनेट है, बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट इट इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। व्हेन यू पुट x equals to 0, so the limit e power 2x minus 1 sin 4x। ठीक है, तो x 0 पुट करोगे तो दिस इज बिकमिंग अ 0/0 फॉर्म। अगेन इफ यू वांट यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल। ओके, limit x tends to 0, so it will become 2 e power 2x upon sin का होगा cos 4x 4। अब आप अगर यहाँ पे x tends to 0 पुट करते हो तो ऊपर आ रहा है 1, e power 2x is becoming 1 and the denominator is also 1, so now your limit can be directly written as 2/4, that means 0.5। ओके, तो अब इंडिटर्मिनेसी उसकी हट गई है। द नेक्स्ट, चलो ये भी बहुत डायरेक्ट है। डायरेक्टली जस्ट टेल मी द आंसर। आई थिंक आई डू नॉट इवन नीड टू सॉल्व दिस। अभी कौन सा फॉर्म बन रहा है? इट इज बिकमिंग अ 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो दो तरीके कैसे भी कर लो, यू राइट इट लाइक दिस or either you apply L hospitals, it does not matter. Put the limit. Now you look, this is 0 and this is minus 0 minus limit x tends to 0, 0/0 form of sin x by x, that means इसका limit 1 होता है, तो your answer will be -1। yes, okay, L hospitals भी लगाओगे तो same ही answer आएगा, it will make no difference। चलो, consider this with all real coefficient, it is known that its derivative has no real roots, the number of real roots of PS। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है PS, उसका बोला है डेरिवेटिव का कोई भी रियल रूट नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर विल बी 2। ओके, तो नंबर ऑफ रियल, द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव विल बी 2, दैट मीन्स अगर वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का एक भी रियल रूट नहीं है, इट मीन्स इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स रूट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, so that derivative has complex root, so definitely there is only one real root for this, क्योंकि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, 3 रूट्स हो सकते हैं, the 2 roots are complex and the 1 root is real। ठीक है, तो directly yes, 1 is the answer, B is your answer। This question, the 3 roots of the equation fx equals to 0 are x is equals to -2, 0, 3. What are the 3 values of x for which f of x minus 3 will be 0? f of x minus 3 will be 0 for which values of x? ठीक है, roots of fx दे रखे हैं आपको, fx के roots हैं -2, 0, 3, x minus 3 के निकालने हैं आपको। तो how you are going to find? Just let us have a look। ठीक है, दो तरीके हैं समझने के, द इजिएस्ट आई विल टेल यू फर्स्ट एंड द अदर वन इज
लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है, तो अगर फंक्शन ठीक से समझ नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नो योगेश, ए इज नॉट द आंसर, ठीक है, जो सेकंड वाला है ना उस वही आप अप्लाई कर रहे हो और उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए फर्स्ट वाला अप्रोच सुनो, दैट इज द बेस्ट एंड इट विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है, कभी उसमें डाउट नहीं रहेगा आपको। तो x minus 2 is the x is equals to 2 is the root, that means x plus 2 is a factor, x is a factor and x minus 3 is a factor, ठीक है। अब आपको f of x minus 3 चाहिए, तो आप x की जगह x minus 3 पुट कर दो, तो this will be x minus 3 plus 2, this will be x minus 3, this will be x minus 3 minus 3, so you get here x minus 1, x minus 3 and x minus 6, तो ये हमेशा आपको सही जवाब देगा। तो आप देखो the function x minus 3 has factor x minus 1 x minus 3, that means x is equals to 1 3 and 6 are the roots. Yes Yogesh, right, so your answer is now D here, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली करना होता, इफ यू वांट डायरेक्टली, सो यू जस्ट हैव टू ऐड 3 इन ईच ऑफ दिस, ठीक है, तो ऐड आप 3 करोगे बिकॉज f ऑफ x का रिजल्ट दे रखा है, x माइनस 3 का चाहिए, तो यू हैव टू जस्ट ऐड 3, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, आपको f ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देखना है, तो मेक दिस x माइनस 3 एज 0, x minus 3 is 0 at x is equals to 3. So add 3 in the roots of this. So you will get your result. ठीक है? This is a short trick, but I will not suggest you to rely on it क्योंकि आपको confusion हो सकता है. I will always suggest you कि आप ऐसे लिख लो, कोई ज़्यादा टाइम तो लग नहीं रहा है, बहुत छोटी सी बात है. चलो, from an equilateral triangular plate of side A square plate of maximum size has to be cut. The side of such a square plate is. Okay, just try it out. Maximum minima का question है, काफी अच्छा question है. ऐसे 2-3 और question है, which will help you to find maximum minima. Equilateral triangular plate है, side A है, square plate of maximum size has to be cut. हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड्स बराबर होती है डेफिनेटली, एंड यू ऑल्सो नो द मीडियन एंड द ऑल्टीट्यूड आर द सेम. नाउ अगर आपको मैक्सिमम प्लेट कट करनी है, देखो बहुत सारी प्लेट्स हो सकती है इसके लिए, लाइक इफ यू हैव अ प्लेट ऑफ स्मॉलर देन उससे बाद उससे बड़ा, तो बहुत सारी स्क्वायर प्लेट हो सकती है, पर अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए यू शुड हैव the edges touching the sides of your triangle, ठीक है, तो आपकी edge should, the corner of your square should touch the sides of your triangle in this way, तभी तो maximum होगा, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ बन नहीं सकता, आपको बस देखना है स्क्वायर की साइड कितनी होगी, है ना। तो ये जो आप if you remember this equilateral triangle, the altitude, ठीक है, the height h is equals to what, h की वैल्यू पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में डायरेक्टली आपको h की वैल्यू पता होती है, √3/2 a. Okay, now if you take, suppose the side is equals to, I am taking here as x this, so or I am taking the complete side as x, let me take the complete side as x, this side as x, तो ये भी x होगा, this will be x as well, so the remaining height will be h minus x, and you know this angle is 60 degree, √3/2, या राइट योगेश, अगर आप हाँ हाइट बता रहे हो तो √3/2 a होती है, दैट्स राइट, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. अब आप देखो, अगर आपको देखना है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो दिस विल बी x/2, दिस इज अ ट्रायंगल with side x, so I can just write
tan 60 is equals to height is h minus x अपॉन बेस इज x by 2. ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3. √3 x by 2 is equals to h minus x. So you will get x is equals to h upon, this will become plus, so √3 plus 2 by 2. तो h का आप सब्सटीट्यूट कर दो, 2 √3 by 2a अपॉन √3 plus 2. आपका आंसर आ रहा है √3a अपॉन √3 plus 2. ओके, so the value of x you are getting as d. इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमा का कोई भी डेरिवेटिव कंसेप्ट लगाना ही नहीं था, बस आपको बेसिक सा ज्योमेट्रिक नॉलेज चाहिए था अबाउट योर इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना. तो एप्टीट्यूड में जनरली आपको मैं बताती हूँ, बट हियर दिस कंसेप्ट द ओनली थिंग इज द हाउ यू आर गोइंग टू relate the sides of the triangle. Okay, is there any doubt in that question? Any doubt? What is the maximum value of the function in the interval 0 to 2? Maximum value. Okay, Yogesh, good. Tell me the maximum value of the function. फिर से तो काफी इजी ही हो गया है एक तरह से आपके लिए, है ना. फिर से डेरिवेट डिफरेंशिएट करोगे, यू विल फाइंड इट आउट, बट द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज यू हैव टू चेक एट एक्सट्रीम्स ऑल्सो. ना, एक्सट्रीम पे चेक करना मत भूलना, बिकॉज इट कैन हैपन दैट एट एक्सट्रीम योर मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग. ओके, जस्ट टेल मी द आंसर. सी, लेट अस चेक. ठीक है, f dash x I'm just writing, this is coming as equals to 2 into 2x minus 1. Okay, I'll put it equals to 0, so I get x is equals to 1 by 2 here. So I'll check by my line diagram, or if I check by f double dash x, you get the value as 2. So this x is equals to 1 by 2 is a point of minima. Okay, x is equal, f double dash x is 2, that's why this point is of minima. Now since this is a minima point, definitely jo maximum value hogi, that will be at the extremes. So you just find the value, whatever value will be. At 0 you are getting value as 6, at 2 you are getting value as 2, you are getting value as 2 into 4 minus 2 plus 3. Yeah, so you are getting 10. Yes, you are right, Yogesh and Ashok. That's nice. चलो, अगर आपको पैराबोला की इक्वेशंस डायरेक्टली याद है तो वहां से भी आप देख सकते हो कि वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो मिनिमा ही आने वाला है, तो आप डायरेक्टली एक्सट्रीम पे भी चेक कर सकते हो. ठीक है, पैराबोला में अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इफ द पैराबोला इज ऑफ दिस type and this is positive coefficient, in that case I'll write it here itself, and this is positive coefficient, मतलब upward facing parabola, upward parabola, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला है, मतलब मिनिमा होगा, तो आप एक्सट्रीम्स पे चेक कर सकते हो डायरेक्टली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमा एट विच वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये भी एक फंक्शन है. इट इज अ फंक्शन, अगेन अ फंक्शन similar to the equation of a parabola, but it's not a parabola, although you have to find out the minima at which value of x. ठीक है, पैराबोला है नहीं वैसे ये, तो आपको फाइंड आउट करना है, तो इस केस में आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू चेक वेयर द फंक्शन इज गेटिंग अ मैक्सिमा और अ मिनिमा. अब देखो, इसमें आपको कोई भी इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो इंटरवल नहीं दिया है, इट मीन्स इट कैन वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली लोकल मिनिमा पूछा है. ठीक है, तो लोकल मिनिमा विल बी योर आंसर फ्रॉम दैट. तो जस्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन.
ठीक है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करो आप एंड फाइंड द वैल्यू। नो अशोक, आई थिंक आपने कुछ गड़बड़ करी कैलकुलेट करने में, एक बार चेक करो, जस्ट चेक इट वंस। Okay, here it is 1 by 2 is also there, so this is what you are getting, 5 minus x square, just a second, I think I have made some mistake. So you are getting x is equals to plus minus root over 5 by 2. So whether it can be plus 5 by 2 or minus 5 by 2, I have to check. ठीक है, ओके योगेश, लेट अस सी कि आप सही बता रहे हो क्या। ठीक है, तो आई जस्ट पुट अ वैल्यू, आई एम ड्राइंग द f dash x diagram. I'll put a value 0. So 0 when I put in f dash x, this is a positive, so this is negative and this is negative. Negative to positive, this is a minima, and positive to negative, this is a maxima. Okay, Yogesh, you are correct. The answer is root 5 by 2. f double dash x भी find कर सकते थे और value देख सकते थे. That's not a problem. ओके, बट एफ डबल डैश एक्स के लिए फिर वो पूरा फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता. एफ डैश एक्स का जो फंक्शन है दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट अगेन, तो थोड़ा लेंथी पड़ता. दैट्स व्हाई द मेथड ऑफ ड्राइंग द लाइन डायग्राम इज द इजीएस्ट ऑलवेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉलिटिकल पार्टी orders an arc for the entrance to the ground in which the annual convocation. ओके, प्रोफाइल दे रखी है आर्क की. वाई इज द हाइट ऑफ द आर्क इन मीटर्स, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट बताना है. यस, ओके अशोक, है ना. कैलकुलेशन का मिस्टेक थोड़ा सा मिनिमाइज रखो, करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल हाइट. प्रोफाइल ऑफ द आर्क इज 2x minus 0.1 x square. तो देखो ये जो है दिस इज अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, है ना. एक्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो डेफिनेटली मैक्सिमा आएगा. जो भी वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट की, तो बस वो वैल्यू देख लो. ठीक है, तो x की वैल्यू, ओके, गणेश हैज आंसर्ड, द 10 मीटर इज द आंसर, गणेश सेज. ठीक है, तो मुझे नहीं पता, आई विल फाइंड इट आउट. y dash I will find, this is 2 minus 0.2 x, put it 0, x is coming out as 10. ठीक है, बट उसने x की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट. ठीक है, तो आप y में x की जगह 10 पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू. कोइंसिडेंटली द आंसर इज कमिंग आउट एज 10. तो आप बच गए. अगर किसी ने x की वैल्यू भी रिपोर्ट कर दी तो भी उसका आंसर सही हो गया. बट ऑलवेज रिमेंबर इट हैज आस्क्ड अबाउट द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट. ठीक है, तो ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि x भी सेम आ रहा था और x इक्वल्स टू 10 पे y की वैल्यू भी 10 आ रही है, तो यू आर सेव्ड. The next question, for a right angle triangle, if the sum of the length of the hypotenuse and the side is kept constant in order to have maximum area of the triangle. तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, वैसे इसका आप याद रख सकते हो हमेशा के लिए, पर आया कैसे रिजल्ट वो जानना जरूरी है, क्योंकि this result the method is important. More questions like this can be asked, so you should know how you are approaching towards this. Tell me the answer if you know. चलो, अगर आपको आता है तो आप आंसर बता दो, else I'll also start solving, I'll start explaining. एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, दिस एंगल इज सम थीटा and thus this is your hypotenuse. Now it says if the sum of the length of the hypotenuse and a side is kept constant. ठीक है, तो I'll take any I'll take this side as x, this side as y.
हाइपोटेनियस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन ऑफ द साइड इज केप्ट एज कांस्टेंट, कांस्टेंट के, इन दैट केस टू हैव द मैक्सिमम एरिया, तो एरिया कैसे लिखोगे, हाफ इंटू एक्स वाई। अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो मैक्सिमाइज ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ए स्क्वायर का मैक्सिमम भी निकालोगे तो वो भी लीड, इट विल ऑल्सो लीड यू टू द मैक्सिमम ऑफ ए। व्हाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज व्हेन आई एम ट्राइंग टू सब्सटीट्यूट इट इन वन वेरिएबल द टर्म्स आर ऑलवेज इन स्क्वायर, तो स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। आई कैन राइट हियर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के माइनस एक्स स्क्वायर, तो y square will become k minus x square minus x square, ठीक है। अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर दो इन एरिया, सो योर एरिया बिकम्स a square, ओके, a square becomes 1/4 x square into k minus x whole square minus x square, ठीक है। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, सो जस्ट मैक्सिमाइज इट। सो फॉर मैक्सिमाइजिंग इट I am taking it as some suppose w, so I'll find dw by dx, क्योंकि आप मुझे मैक्सिमाइज करना है, a स्क्वायर को मैक्सिमाइज करो या a को, it does not matter, so it will be 1/4 and when you differentiate it it will become 2x k minus x square थोड़ा सा लंबा हो रहा है इधर, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आई विल टेल यू दैट मेथड एज वेल, ठीक है। इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर एक तो पूरा कॉमन आ रहा है सब में से, तो विल टेक एक्स स्क्वायर आउट एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ योर एक्स, तो द वैल्यू ऑफ एक्स विल कम आउट एज इक्वल्स टू k/3। अगर आप यहाँ से कर सकते हो फाइंड तो ये कर लो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो आप इसको cos थीटा, यू टेक दिस हाइट एज h, this hypotenuse as capital H, and this will become cos theta, x will become h cos theta and this will become sin theta। अब आप इसका h plus h cos theta is equals to constant करके now you differentiate it, ठीक है, and then find it out, तो you get your value x is equals to k/3। now this differentiation has turned longer because I have squared the term इंस्टेड ऑफ स्क्वेयरिंग। अगर मैं इसको सिंपल रखती तो ज्यादा जल्दी हो जाता। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टेल यू व्हाई दिस डिफरेंशिएशन हैज टर्न्ड लॉन्गर। जैसे कि आपने देखा अगर मैंने ए स्क्वायर किया था तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया था डिफरेंशिएशन। इंस्टेड ऑफ squaring it, if I just simply keep it as equals to this, okay, and solve it here itself, y is equals to this value, so I'll get here 2kx k square minus 2kx as the value of y, and then I can either square it, y square will be k square minus 2kx, or I can directly substitute a, ठीक है। तो मैं I should have solved it here itself, so I'll just write it as 2kx x into root over k square minus 2kx, and then I will differentiate it। The differentiation here you are getting 2k
minus 2. Now put it equals to 0. So you will get k square minus 2kx minus k is equals to 0. So this is again getting a value equals to, k square minus 2kx. Yeah. So here you are getting the value of x. ठीक है, अगर आप यहाँ से स्क्वायर करके भी पुट करोगे तो अब चलेगा. मैंने यहाँ पे जब सिंप्लीफाई नहीं किया था तब वो लंबा हो गया था. You can simplify and put it and find the value of x. Now the theta, if you want to find, so I'll find tan theta. Tan theta is y by x. My y is k square minus 2k k by 3 upon x is k by 3. So you will get tan theta is equals to root 3. That means theta is 60 degree. Yeah. So you are getting your tan theta as. This result you can directly remember from here. हमेशा जब भी ऐसा question हो, when the sum of one of the side and hypotenuse is kept constant, the sum will come out equals to the angle will be 60 degree for maximum area. वैसा ही एक question है, to find the area of a rectangle which can be inscribed in an ellipse. ठीक है, area which can be inscribed in an ellipse. इसके लिए just try to find out. There is a direct formula also which I will tell, जो कि derive होता है आपके ही differentiation के formula से. If you have this ellipse, ये जो x square plus y 4y square है, that means 1 upon 2 square is equals to 1. तो ये जो ellipse है, this ellipse is what? What does it represent? The denominator of x is 1. That means this is 1 comma 0 minus 1 comma 0. This is 1 0 comma 1 by 2 and 0 comma minus 1 by 2. This is the ellipse. अब अगर आपको इसमें maximum area का rectangle चाहिए, that means the sides will lie on the ellipse. The vertices will lie on the ellipse. So this will be the maximum the rectangle with maximum area. अब आपको find करना है इसका area कितना होगा. Find the area of this rectangle. ठीक है, तो एक direct formula है that is equals to the area will be 2ab. So you can directly find out a and b, what a and b represents. ये आपकी general ellipse की equation है. So a and b you can find out by comparing. So if you write 2 into a is 1 and b is 1 by 2, your answer will come out as 1. ठीक है, पर मेथड इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेथड कैन हेल्प यू टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल. So the only thing you have to do is, here if it is a rectangle, suppose I am taking the side as x, this is x and this is y, so the complete side is 2y and this complete side is 2x, so the area is 4xy. ठीक है, तो here also either you can square the area and maximize it, or you can maximize here itself. So if I am maximizing a square, I am writing it as w with respect to x. So this is 16. I'll just substitute y square in terms of x. तो वो हो जाएगा 1 minus x square by 4. So differentiate this, you will get 4 into 2x minus 4x cube.
is equals to 0. So you will get x 1 minus 2x square is equals to, x will come out plus minus 1 by root 2, y will come out equals to, put it here, your y will come out equals to 1 by 2 into 1 by, yeah, 1 by, okay, this is y square, ठीक है, तो 1 by 8 is coming out. Think I have missed something, just let me check. X power 4 is 2x minus 4x cube, x is coming out as 1 by root 2, okay, and y is coming out as, okay, y is coming out as 1 by root 8, yes. So y is 1 by root 8. Now you find the solution. Area will be 4x into y. Okay, and this direct answer, this is a short trick for you to remember. अगर ऐसा ही question दोबारा आ जाए for any other your ellipse, ठीक है, कोई भी ellipse आ जाए किसी भी form का, तो now you can directly answer this question. Find the answer for this. Consider a function x by z. In the variables आपको बताना है partial derivative of the function, partial derivative of this function. Partial derivative वाले question it is asked with respect to x and ये questions काफी आसान होते हैं. In partial derivative, you just need to partially differentiate the function with whatever variable it has been asked. तो आप इसको अगर partially differentiate करते हो तो देखो x सिर्फ first term में है, तो आपका partial derivative आएगा into 2x. The points are given, x is equals to 2, y equals to 1, z equals to 3. बस आपको substitute करना है and you have to check the values. 3 square into 4. So it will come equal to 40. It's a simple question. Next question is, the next question is u is equals to log x square minus x square plus y square and upon x plus y. What is the value of x del u by del x plus y del u by del y? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अगर अब आप इसको डायरेक्ट नहीं जानते हो, इफ यू डू नॉट नो अबाउट द यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, इन दैट केस अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये आपको बहुत मुश्किल होगी. So there is a Euler's theorem which says, Euler's theorem for homogeneous function which says, if you have some function, suppose w is a function of u such that this function of u is a homogeneous function of degree n, homogeneous function of degree n. In that case, when you have to find the derivative x del u by del x plus y del u by del y, it can be written directly as equals to n into function of u. ठीक है, the only condition is that this function w is dependent on u, and this u is a function of x and y and they are continuous functions. That's the only rule which is needed.
तो अब अगर आप देखो द फंक्शन u is, if I take an antilog, so this becomes e to the power u is equals to x square plus y square upon x plus y. I'm writing this as w. So w is a function of u, where u is a function of x and y, and this is a continuous function. Okay? U is a continuous and differentiable function. So I can write that x del u by del x plus y del u by del y is equals to n into function of u. n is the degree of homogeneity. Degree of homogeneity इधर कितना है, ऊपर वाले का डिग्री कितना है, x square plus y square, degree is 2, and degree of x plus y, the degree is 1. So the degree of this complete expression will be 2 minus 1, that is 1. N is equals to 1. This value will come out equals to 1 into EU. So this is your solution using Euler's homogeneous equation directly. अगर अब आपको नहीं निकालना आता, if you do not know homogeneous function like this, then आप del u by del x del u by del y करके भी निकालोगे तो आपका आंसर यही आएगा. The only thing is, if you know this Euler's theorem, then for homogeneous function, then it's easier and you do not need to make any effort. Okay, the double integral is given here and you have to find what it is equivalent to. What is the equivalent function of this double integral? So how you are going to change the order of integration, that's important. You should know how you're going to change the order और how you are going to change the limits. Basically ये जो आपको function दे रखा है, integration, double integration 0 to a 0 to y of xy, इसका मतलब है first it is integrating with respect to x and then with respect to y. तो ये जो limit है आपके, that is for x and these are the limit for y. So you have to check the resulting options. Here also the first integration is with respect to x and then with y. Still the limits have been changed. Here the first integration is with respect to y and then with respect to x. Here it is both with respect to y. तो आपको चेक करना पड़ेगा. तो कैसे चेक करोगे? हमेशा for changing the limits, you just draw a small diagram. Limit of x क्या है? Limit of x is from 0 to y. 0 to y means x is equals to 0 to x is equals to y. X is equals to y is a line, right? And the limit of y is equals to 0 to a. So y is equals to 0 to y is equals to a. Y is equals to a. That means you are integrating this particular area. ठीक है, तो अगर आप पहले with respect to x कर रहे थे, that means your strip was like this. This was the length of your strip. This was your dx. Now if you want to change the order of integration, the method of integration, now if you first want to integrate with respect to y, तो आपका strip ऐसा होगा. This will be dy. ठीक है, तो अब आप अगर change of integration apply कर रहे हो, तो if you are first integrating with respect to y, this function xy, so your limit will be from y is equals to x to a. Y is equals to a. Y is equals to x से लेके y is equals to a तक. And then you are integrating with respect to x. तो x का limit देखो कहाँ से कहाँ तक होगा. The intersection point of this y is equals to x and y is equals to a is a comma a. So the limit of x will be from 0 to a. ठीक है, 0 to a. So x is equals to 0 to x is equals to a. So your resulting solution is x to a, 0 to a, function xy dy dx. First integration with respect to y, then with respect to x. So your answer is C. Okay, answer is C. कैसे देखा आपने अभी? I think it should be clear how you are changing the order of integration.
The order of integration, if you want to change, just draw a small diagram defining the limits, and after defining the limits change the strip. ठीक है, तो dx की जगह dy लोगे तो लिमिट्स बदल जाएगी बस. So change the limits carefully. Okay, is there any doubt? Let's look at the next question here. The next question is, x is a continuous variable defined over the interval. Fx is given as, if it is not visible properly, I'll write it here. Fx आपका दे रखा है e to the power minus x minus e to the power minus x. Okay, you have to find integral of fx. So you have to find the integral of this function. Tell me the integral of this function. Can you tell me the integral or not? Let us see. Okay, Pranay is telling B. Okay, let us see. How did you do, Pranay? I am writing this fx as e to the power minus x upon e to the power minus x. ठीक है, इस तरह से I have written this. Did I make a mistake or no? Is it fine? Are you understanding ये कैसे लिखा? E to the power minus x minus e to the power minus x can be written as this. E to the power, ठीक है, तो okay. So this is how you can write it. So I have just kept it below. Now if you can see, ये काफी आपके लिए आसान हो जाएगा. If I substitute e to the power e minus x, e to the power minus x as t, so you will get e to the power minus x as dt. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे dt की जगह सब्सटीट्यूट करने के लिए you have definitely got how you are going to substitute it. So you are substituting it as minus dt upon this will go below, that will become t, and there is already your function, so it will become t square, so it will become minus t is e to the power minus x, and there is a minus sign. Okay, so Pranay, your answer was correct. Okay, I even did not know the answer. I am solving live here with you. Okay, so this is your answer. I think the procedure is clear. If there is any problem here in understanding the procedure, then in that case just have a little bit of revision of your exponential powers. ठीक है, in case if you have any problem in exponential power, then in that case you need to have a revision and find out the basic rules. Okay, let's look at this. Consider the following definite integral. Integral is 0 to 1 sine inverse x whole square upon root over 1 minus x square dx. ठीक है, तो ये इसको तो आप डायरेक्टली देख पा रहे होगे. अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है, in that case let me tell you, whenever you have, I have already told you, whenever you have a function like fx into f dash x and you have to integrate it, in that case you can directly write suppose fx to some power n.
ओके, सो इन दैट केस आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो fx to the power n plus 1 upon n plus, ओके। और अदरवाइज ये जो आता है आपका, दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम बेसिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो साइन इनवर्स x को इफ यू पुट एज t, then your differentiation is 1 minus root over 1 minus x square will become dt. So you can just substitute it here. तो आपके लिमिट्स आपको चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे. It will become t square dt. Now when you change the limit, when x is 0, sin inverse 0 is 0, so your limit is 0. When x is 1, sin inverse 1 is pi by 2, so your limit is pi by 2. Now you integrate, it becomes t cube by 3, putting the limit 0 to pi by 2. What you get here, 1 by 3, you get pi cube by 8, and your answer comes out equals to pi cube by 24. Yes, Pranay, right. Just okay, fine. So you are getting your answer here as pi cube by 24. Next question of your integral 1 upon 2 pi integral x plus y plus 10 dx dy, where d denotes the disk. Basically, it's not a disk, it is a circle equation, right? X square plus y square less than equals to 4 evaluates to what value? So you have to find the value of the integral. Tell me the value. How are you going to find it out? Okay. कल ही जब मैंने आपको application of integrals बताया था, in that case I have already told you, whenever you have an equation like this, in this case when you have to integrate, it's very important that you understand by polar form it will be easier. Polar form से बहुत आसान हो जाएगा, because in polar form if you substitute x is equals to cos theta r cos theta and y is equals to r sin theta, तो देखो ये becomes r square less than equals to 4. Basically it represents your circle with radius 2. Okay, so this represents a circle with radius 2. अब आप अगर इसको यहाँ पे substitute कर देते हो तो you will be very easily able to write the limits. ठीक है, so instead of x I am writing r cos theta, instead of y I am writing r sin theta plus 10. And as I have already told you, when you want to change your dx dy integral to dr d theta, you should multiply it with Jacobian. ठीक है, Jacobian इसका क्या आता है? Jacobian when you have this substitution is r. So you multiply it with r dr d theta. Now you have to check the limits. तो limits check करने के लिए look carefully how you are putting the limits here. I'll tell. Limits put करने के लिए, this is your circle with radius 2. So this is your r vector and this is d theta. So this is d theta and this is your r vector. So r is varying from where to where? It is varying from 0 to 2 because the radius is 2. So the limit for r is from 0 to 2. The limit for theta, okay, the integral it is being asked for complete integral. ठीक है, पूरा डिस्क के अराउंड, पूरा डिस्क के अलोंग, मतलब थीटा यहाँ से चालू होके पूरा का पूरा आपको करना है. दैट मीन्स थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 pi. ओके, थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 pi विच यू हैव टू इंटीग्रेट. अब आपका देखो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया है. दिस इज r square cos theta, r square sin theta and 10r. I am first integrating it with respect to r, then I will integrate it with respect to theta. ओके, आप चाहो तो पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हो. इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट रियली मैटर. यस प्रणय, 0 to 2 pi, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन आपको बोला है. ठीक है, तो अब आप इसको पहले जब इंटीग्रेट करोगे, दिस विल बिकम r cube by 3. आई विल राइट हियर r cube by 3 cos theta plus sin theta plus
10r square by 2, put the limit of r 0 to 2 and then you have to integrate with respect to theta. ठीक है, तो अब आप इसका रिजल्ट देखो कितना आ रहा है. When you put here 2, it will become 8 by 3 cos theta plus sin theta, and this is 5 into 4, that is 20. Now you have to integrate this with respect to theta. So your integration is now very easy. You can very easily integrate it, right? तो cos का integration आपका, अच्छा देखो integration इधर निकालने के लिए 0 से 2 पाई है, cos theta between 0 to 2 pi. When I substitute instead of theta, I put 2 pi minus theta. तो cos 2 pi minus theta कितना हो जाएगा? It will become cos theta. ठीक है, और sin 2 pi minus theta कितना हो जाएगा? I think it's not visible on the screen. Just wait a minute. Cos 2 pi minus theta कितना होता है? Cos theta. And sin 2 pi minus theta कितना होता है? Minus sin theta. ठीक है, तो इसका मतलब sin theta is an odd function between 0 to 2 pi. That's why sin theta का जो भी इंटीग्रेशन के बाद आप लिमिट्स पुट करोगे वो 0 आएगा. So I am dealing here with cos theta and plus 20 and I am going to integrate it to find the result. ठीक है, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि फालतू का वो वेस्ट था sin theta को इंटीग्रेट करना. Cos का इंटीग्रेशन will come out equals to sin 0 to 2 pi plus cos 2 pi minus theta is theta, right? Cos theta. This is 20 theta. Now you just put the limit 0 to 2 pi and check whatever the answer is coming out. So I can see the answer is coming out here as equals to 40 pi upon 2 pi. ठीक है, तो आपका जो लिमिट था वो 40 pi upon 2 pi आ रहा है. That means it's coming out equals to 20. Okay, yeah, 40 pi, and here 2 pi was already there. So Pranay, I have divided it with 2 pi and I am getting here as 20. Okay. Okay, is that clear? 20 is your answer. अगर आप इसको direct सिर्फ और सिर्फ keeping this Cartesian coordinate if you would have attempted, उस केस में आपका इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाता. ठीक है, बिकॉज y will be written as रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर आपको रूट का इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो उसमें लॉग के टर्म्स आते, साइन इनवर्स के टर्म आते. ओके, सो पोलर कोऑर्डिनेट हेल्प्स यू टू हैव an easier approach. Okay, is that clear? Parametric curve is defined by x is equals to cos pi u by 2, y is equals to sin pi u by 2 in the range of u between 0 to 1. It is rotated about the x-axis by 360 degrees. The area of the surface generated, you have to find out. Area of the generated surface. Find the area of the generated surface. तो आपको जब मैंने last time the application of integration when we studied, I'll tell you once again. Whenever your parametric curves are being rotated, आपको surface area generated, तो आप दो तरीके से देख सकते हो, whether one is graphically and one with the help of formula. Okay, so we will see graphically and then we will also see with the help of formula. No problem, both will give you the same result. So when it is rotated about x-axis, तो देखो graphically देखो, this curve which x is equals to cos pi u by 2 and sine, that is basically nothing. It is a circle, right? Circle है. Y is equals to r cos theta, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. It is a circle of radius 1. ठीक है, क्योंकि r आपका क्या है? 1 है, तो your radius is 1. Now which area they are talking about? U is between 0 to 1. U is between 0 to 1, so you put the value of
x is 1 into cos pi u by 2. So when I put u equals to 0, cos 0 becomes 1, and when I put u equals to 1, this becomes 0. And for y also it is y sin, okay? So u is between 0 to 1 means 0 to 1, basically this first quadrant. इट इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है, ओनली दिस एरिया यू हैव रोटेटेड अबाउट योर एक्स एक्सिस, दैट मीन्स आफ्टर रोटेटिंग what you must have got is like this. What it must have generated is a हेमीस्फेयर, है ना? क्वाड्रेंट को रोटेट करोगे तो हेमीस्फेयर बनेगा, ठीक है? अगर आप सेमी सर्कल को रोटेट करते अबाउट एक्स एक्सिस, ऊपर वाले सेमी सर्कल को, तब आपका क्या बनता? फुल स्फेयर बनता. और अगर आप y इज इक्वल्स टू वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हाफ सर्कल को, सेमी सर्कल को, तब आपका फिर से फुल हेमीस्फेयर बनता, फुल स्फेयर बनता, सॉरी. सो दिस इज योर हेमीस्फेयर. सो इफ यू वांट टू फाइंड द सरफेस एरिया जनरेटेड विल बी 2 पाई r square. r कितना है? The radius is 1, so it will be 2 pi. 2 pi आपका आंसर आ जाता डायरेक्टली. अदर देन दिस, इसके अलावा आपके पास एक फॉर्मूला है डायरेक्टली फ्रॉम योर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, which says when you want to find the surface area generated by any of the curve when it is rotated about x axis, it will be equal to integration 2 pi integration from a to b y ds, ठीक है? अब अगर ये पैरामेट्रिक कर्व है, इफ इट इज अ पैरामेट्रिक कर्व, फॉर अ पैरामेट्रिक कर्व दिस सरफेस इंटीग्रल विल बिकम 2 pi इंटीग्रेशन, जो भी आपके पैरामेट्रिक की लिमिट दे रखी है a to b, y as a function of your parametric equation, y as a function of theta, dy by d theta, ठीक है? तो सिंपली आपने जो पैरामेट्रिक फॉर्म को कन्वर्ट करा है, यू हैव कन्वर्टेड योर ओरिजिनल इक्वेशन फ्रॉम पैरामेट्रिक फॉर्म. तो हियर यू कैन राइट इट एज 2 पाई इंटीग्रेशन, u के अंदर है दिस, हियर योर इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू u, so we will see the limits of u. First I'll write the function y, which is sin pi u by 2. Now dy by d theta, ठीक है? dy by du I am writing it out, so this will become equal to basically pi u by 2 is your theta, ठीक है? This is your theta, pi u by 2 is your theta. So when I put u is equals to 0, theta becomes 0. When I put u equals to 1, theta equals to pi by 2, ठीक है? So I'm just writing instead of pi u by 2, I'll write theta, जिससे कि आसानी होगी इंटीग्रेट करने में. I'll write sin theta. So differentiation of dy by d theta, dy d theta, if you want to find out, so this will give you sin ka differentiation will be cos, and also y is a function of what? Pi u by 2, so pi by 2 into du, ये आपका आ जाएगा. So it will become cos theta into pi by 2 du, basically pi by 2 du is d theta, pi by 2 du is d theta. Now integrate it from 0 to pi by 2. तो आप इसको कैसे लिखोगे? You will write it as 2 pi sin 2 theta by 2 का integration from 0 to pi by 2 d theta. Okay. Now you integrate and you will get the result again equal to 1 only. The same thing you are going to get. Okay. The substitution here I am telling you because changing to parametric to your normal थीटा फॉर्म इज अ बिट ट्रिकी, क्योंकि आपको लिमिट चेंज करनी पड़ती है. हाउ क्वाड्रेंट इज फॉर्म्ड यूजिंग लिमिट ऑफ u. अच्छा, u इक्वल्स टू 0 to 1.
ये कैसे चूज किया आपने? देखो 0 to 1 में आप x के अंदर चेक करो, पुट 0 एंड पुट 1, ठीक है? तो क्या आ रहा है, द वैल्यू फॉर कॉस इट इज कमिंग फ्रॉम 1 to 0 एंड फॉर साइन द वैल्यू इज कमिंग, मतलब यहां से लेके यहां तक x की वैल्यूज है, एंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर 1 एंड 0 एंड 1 कैसे आ रही है, इट इज कमिंग 0 to 1, 0 to 1, ठीक है? तो u is between this area for x is equals to cos pi u by 2 and y equals to sin pi u by 2. X is taking value between 0 to 1 and y is taking value between 0 to 1. Okay, this is 1. So क्या बन रहा है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है. You are getting your first quadrant. This. And then you are rotating it. That's why. Okay, Ashok? The next question, surface S 2x plus 5y minus 3 is integrated once over a path consisting of the point that satisfy x plus 1 whole square plus y minus 1 whole square is equals to root 2. The integral evaluates to which value? ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज अच्छा क्वेश्चन है. ये आपका इक्वेशन है 2x plus 5y minus 3. You have to integrate this line actually over the surface which is given by this equation x plus 1 square plus y minus 1 square is equals to root 2. ठीक है? तो जब भी मैंने आपको बोला है इस तरह की इक्वेशन होगी, पोलर फॉर्म विल बी द बेस्ट. उस इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले यू हैव टू अप्लाई द शिफ्टिंग ऑफ कर्व. बेसिकली एरिया तो चेंज नहीं होगा ना, आप अगर कर्व को शिफ्ट भी कर दोगे, उसका ओरिजिन शिफ्ट कर दोगे, तो व्हाट द इंटीग्रेशन गिव्स इज यू is the area, or double integration gives you the surface area. The integration will not change. ठीक है? So here I am putting capital X is equals to small x, sorry, small x is equals to capital X minus 1. ठीक है? x equals to minus 1 पे this is having the center, that's why, and this is having center at y is equals to 1. So small y will be capital Y plus 1. ठीक है? This is the shifting of curve basically. And here capital X is r cos theta and capital Y is r sin theta. Okay, now just substitute it here in this equation. So you get 2 into x minus 1 plus 5 into y plus 1 minus 3 double integration. Now the double integration will be capital dx capital dy. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा 2x plus 5y double integration dx dy over the surface. Now center, yes, center minus 1 comma 1, radius is equals to 2 to the power 1 by 4. ठीक है? रूट 2 है ना ये, तो रेडियस इज 2 to the power 1 by 4. अब आप यहाँ पे x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा जब पुट करते हो एंड यू टेक द लिमिट्स, ठीक है, तो यू विल गेट 2r cos थीटा प्लस 5r sin थीटा. आपको इंटीग्रेट करने के लिए सिंस यू आर चेंजिंग फ्रॉम xy कोऑर्डिनेट to your dr d theta coordinate, you have to multiply it with Jacobian. ठीक है? तो this r is the Jacobian you have been multiplied. Now r का आपको लिमिट देखना है, तो r का लिमिट देखने के लिए the circle, ठीक है, सेंटर इसका है -1,1 पे एंड -1,1 एंड रेडियस इज रूट 2, जिसको आपने शिफ्ट कर दिया है. सो नाउ इन द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम द सेंटर इज एट 0,0 एंड द रेडियस इज रूट 2 to रूट 2, मतलब 2 to the power 1 by 4. So it does not matter. I am just writing here the r limit is from 0 to some value of r. I'll tell you why it does not matter, because look here, I'm going to tell.
एंड द थीटा लिमिट्स, ठीक है, थीटा लिमिट्स आपके कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 पाई, बिकॉज पूरे आपको पूरे सर्कल के अराउंड इंटीग्रेट करने को बोला है, तो 0 to 2 पाई. Okay, now here if you see, when you put theta is equals to, instead of theta you put 2 pi minus theta, so cos 2 pi minus theta, that is in the fourth quadrant, and sin 2 pi minus theta is also in the fourth quadrant. तो ये दोनों कैसे हैं, दे आर ऑड फंक्शन, तो ये जो पूरा इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 0. ठीक है, ऑड फंक्शन में अगर if the function f of, is it visible here, yes, f of a plus b minus x is equals to minus of fx, that means that function is odd for the interval a to b and the integration will be 0. ठीक है, so this denotes odd function for a to b and this integral will be 0. So this integral I am directly writing at 0. That's why it does not matter कि r का limit क्या है. ठीक है, so that was all about the questions. ऐसे ही बहुत सारे questions पूछे गए हैं आज अभी तक आपके in your calculus portion. There are a lot of questions like this which have been asked previously as well. Okay, so if you see the previous year questions, more or less the variety of questions roam around this concept only, and there are few more practice sessions coming on for you before your exam, and also we are going to have lectures on your differential equation and Laplace, numerical methods, partial differential equation and everything, calculus, that is vector integration and all, complex analysis. So all the things before your lecture, before your exam GATE 2021, we will cover almost all of that. And even if you have not studied till now, it does not matter. You can still have all the concepts gained, because the practice will help you out. Okay, so do not miss the practice session. And yes, tomorrow from differential, tomorrow we are having differential equation and it's practice. So do not miss the lectures. This 1 to 2 hour lecture daily, this will definitely help you out in your GATE preparation for mathematics. Okay, that's what I can guarantee. Okay, so have your practice continuously. All the best. Do not forget to like, share and subscribe this video and share it with as much people as you can. Hit the bell icon so that you have the upcoming notifications of the lecture. Follow the lead gate channel. वहाँ पे आपको जो ये notes हैं आज के, that will be available to you, so you can directly take these notes, download the notes from there itself, and then you can just look through whatever confusion. अगर आपको कोई है या आपको कभी लगा कि ये question better है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है. You can directly download the notes, and the notes are also available on the Google Drive. So there is a link on the Google Drive. That link will also be shared on the Telegram group. After each lecture we share the notes, so just join the Telegram group and share it as much as possible. This is my code ARO10. If you haven't already been using the Unacademy learning app, just go have a look there. वहाँ पे भी सारे recorded videos available हैं, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो. Okay, do not miss this opportunity. Keep practicing. All the best for your exam of GATE 2021 and also for future endeavors. I hope we'll meet tomorrow at the same time. Thank you, Pranay. Thank you, Ashok. Thank you. Thank you, all of you, for watching the video and joining me for this live session. Keep practicing. All the best.